Everyone, we'll be starting in a couple of minutes, so if you could settle down, please. So in the remainder of our first forum session, we'll be progressing with the next two and final speakers for today. The first speaker we have up is architect Manal Abdullah. Architect Manal Abdullah has more than 8 years of experience in academia and the industry. She has taught in and conducted workshops for institutions like NUST, BNU, and LUMS. Since graduation, the projects or the research she has been working on explores medium through sustainable approaches towards design and architecture. Her presentation in Forum 1 is an exhibition of her bachelor's thesis. This particular paper looks into the idea of post-human architecture and how it can become a tool to address the potential extinction of bird species that are unique to Islamabad. In terms of design, landscape and temporary structures spark her interest. She combines these mediums with questions which are local as well as global and extremely relevant at this point in history. Now I would like to call upon architect Manal Abdullah to come to the stage and share her thoughts. The topic of her talk would be, does architecture only dominate for its main user, or can it also address the indigenous species of the areas it infiltrates? Thank you for coming, Manal. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. There we go. Previous slide, please. First slide. Thank you. From my understanding, I don't have a lot of time either. 10 minutes, I think 10, right? I'll try to keep it within that. The story is extremely long and it stems from a bachelor's thesis, so I'll try to keep it as simple and straightforward as possible. The research and the paper that I've conducted as a part of a larger investigation, it's called Multi-Scale Post-Human Architecture, a Solution for the Endangered Birds of Islamabad. Next slide, please. So, this stems from the idea of Islamabad itself and how it was made. Story ko thoda chota karne ke liye, I'll give you a small example. Everybody must be aware that due to continental shifts, the Himalayan range was formed, and due to that, it is a very, very unique ecology in itself. It has geographical constraints and flora and fauna that are extremely unique, and the kind of animal life that it supports can only exist in two other areas in the world, one of which is the South American forests. So due to that, I'm not sure if many of you are aware, Islamabad is an international bird watching spot. It is very well known, and a lot of bird watchers come here very regularly. They maintain blogs, particularly photographing birds on Trail 3, Trail 5, and Trail 6, all of these things that we've grown up with. In the past few decades, a lot of issues have been causing problems for these particular species. There are about 322 species that exist in Islamabad, live in Islamabad commonly. 233 roughly out of those are unique to Islamabad and only migrate to two other parts in the world on the entire planet. And about 30 to 40 of them are now on IUCN's endangered list species. So we're heading towards a big problem. And these statistics are actually from 8 years ago, and I'm sure that they've gotten worse since the past 8 years due to all the extensive construction that has been going on in our beautiful city. We've changed it into something that I'm sure a lot of you agree is changing what Islamabad was known for. A quick, sorry. Next slide, please.
So a quick look at the map that we're all very familiar with, if any architects have done any work at all in Islamabad. Just to quickly highlight and explain to you, zone number 3, the green zone highlighted in all of this area, is known as, or was known as, the Margala Hills National Park. It had a very particular kind of policies and bylaws that were protecting it in order to preserve the species that live over here, because the biodiversity is, and CDA and all of these people, they're completely aware of this as well. That's where I got the data from when I was doing my thesis research. Zone number 3 is meant to be the Margala Hills National Park, and it is meant to be preserved that way. Unfortunately, over the years, Zone 3 has started decreasing in size. Some of the problems that these species face, which are caused to the zone number 3, जिसमें आपकी Margala Hills भी आती हैं. First of all is the infamous introduction of new species. By that, I do not just mean the animal species, I also mean the flora and the landscaping, and the trees that we're all aware of were introduced into Islamabad and then started causing problems and kind of mutated into other trees that were sort of taking over the indigenous species in Islamabad. So that is reason number 1, that is actually causing harm to the birds and their environment and the food that they need. Then, of course, climate change itself and habitat destruction caused due to encroachment, policy making, new towns being made everywhere somebody feels like making them. Policy making पे मैं छोटी सी बात बाद में भी करूँगी. Due to hunting as well, because they had control over hunting, but I believe in 2020 there was a News Tribune article that that declared that hunting was allowed one more time in the south of Pakistan for partridges in particular. Partridges are the birds, like pheasants, they have longer tails and they remain around the foothills. Those are the ones that are most endangered because we keep on encroaching into their areas. Even making areas like Sadpur village commercial, what we're basically doing is we keep on building in the foothills, and these animals have a certain flight distance. Flight distance means the distance that they're comfortable keeping with you, right? And if you keep decreasing that distance, they get scared, they can't live there anymore, they start dying. And Saidpur village has even created a hatchery for breeding them. But now they're undergoing issues because of policies, funding, they don't have water, they don't have enough to feed the birds. And so even whatever birds they're breeding now in the past 15 years are kind of getting endangered. It's really ironic. And most of all, unsuitable architecture. So because of this, I'm gonna go back to policy making. Inshallah, the next part of my larger research is going to focus on that particular part because I need written data on it. But as far as I'm aware, the information that I got from CDA is that in 1989, due to, well, certain presidents and prime ministers that we had in the 1980s and the political movement that was going on, and a military president in particular requiring certain areas to be built a certain way around F5 and all of that, they made the laws a little flexible. So the irony of it is that the laws were actually apparently changed in 1989 to accommodate the building of areas near Barakahu for housing, allowing farms in Chak Shehzad to have a larger footprint, and just kind of generally allowing zone number 3 to not be respected the way that it should have. Which takes me to now my next slide, please. One of the major users of our city, next slide, thank you. This is one of the major users of our city, and believe it or not, Islamabad is lesser known for some of the major architecture that we have, but rather more well known for the bird species that we have. When you talk to biologists and when you talk to people outside, you talk to actual people who are into, well, animals and biologists themselves, they will give you a lot of data on it, and you will find a lot of online, even if you Google right now, you'll find a lot of online blogs that photograph them, and I got all of these photographs from those blogs. All of these species are specific to Islamabad, and they migrate to only 2 other places in the entire world. And so I think realizing that this is a part of the identity of Islamabad and trying to retain it, because these species are really eventually going to die out. My data on these birds is actually 8 years old,
and it has already disused as of the updates that I have right now. And in the next 10 to 15 years, we might see even less of these birds. If I could quickly give an example from Lahore, I'm sure a whole bunch of us remember that when we were younger and during our childhood, Lahore was full of jugnus, fireflies, right? And we don't see them anymore. And that's a conversation that's coming up. Where did they all go? Because obviously there's an ecological cycle and it's being disturbed. And so due to issues like that and bird species dying out and the overall pyramid being affected, these guys are eventually slowly going to kind of die out too, unfortunately. Enter in the idea that I'm bringing in with this paper, trying to look at 3 practical examples of what we can do as architects. Next slide, please, which comes from the idea of post-humanism. The Anthropocene era that we have lived in the past decade, it is coming from the post-industrial age of just constantly industrially mass-producing quick ideas because it's capitalism and we don't have any time, right? These solutions have kind of started affecting the environment that we live in. And so post-humanism basically talks about why we need to go post the human part of thinking. Why the world needs to be considering more than human practices, because we live in a world where there are a lot of other stakeholders and a lot of other living beings. Previous slide, please. And a lot of other living beings that are totally being affected by everything that we do and the way that we build. So post-humanism comes after the Anthropocene era and talks about every user. And in a way, in my paper, I try to talk about it as an evolution of zoo design, which is absolutely obsolete now. Hona hi nahi chahiye. And I have another paper on that. And how in Pakistan we practice it relatively better because we talk about landscape immersion, where if we do bring in animals in the zoo, then we try to create an environment where they would not be harmed too much. But then we've seen that in our zoos, it is not always implemented in the best manner. Next slide, please. And so the post-human era talks about the user-centered design, human-centered design की terminology आप सबने सुनी होगी, design thinking की आपने terminology सुनी होगी. All of these solutions are not applicable if we are only talking about ourselves and if our designs are only human-centric, right? And this does not just include birds, it can include a lot more. My research is focused on birds, but we have to realize that everything that we build on is affected, down to the micro level, down to every insect that moves around. And due to that insect having to move things around, the whole ecology is affected. There's a story about a certain city in another part of the world. Maybe it's just a kind of legend and not really based in fact, but I completely believe it. When a certain pest control insecticide was used on a certain crop, there were these certain locust insects that did not feed on it that year. So successful crop for the people, right? What ended up happening was कि वो locust कहीं और से आते थे, and they were the diet of a specific eagle bird that used to get on them. So that eagle did not come to the city that year, and then therefore there was a certain wolf that came after that eagle in the woods of the cities, in the forest that surrounded the city, and that fox, did I say? Some fox species. And then due to that fox species not coming in, what that fox species actually used to do was bring a particular kind of sand and earth on its fur from one particular place over there, and it used to fertilize a certain tree in that area which was indigenous to that area. And that year, that tree did not grow the fruit that it used to. And so the caterpillars that used to feed did not get enough feed from those trees, and so they started to feed on the crop. And so the overall circle, and then the crop of that year was destroyed anyway, in spite of the insecticide using. And so we need to understand that our little actions have effect on a micro level that are eventually going to get back to us in every way. And so user-centered design and the evolution of how the zoo concept goes. Sorry, can you go back to the previous slide, please? Previous. Yeah. So we see that from living natural history cabinet, something that we've seen very, very commonly, moving on to zoological parks and safari parks that we see. Now we need to talk about conservation on a certain level where we have to take action in the urban setup. And my 3 case studies are basically based on action
that can re-inculcate urban wildlife back into itself. And these are 3 very practical examples, because if we move on to the next slide, well, that's just a comic, but this is what basically happens. The bear was always there, and a bear is a big thing, you know. We're not even talking about the insects and the birds and the smaller species. They're everywhere. They're on every plot that we start building a house on. And you can't blame them for being there. You can't be annoyed at a lizard for being there in your house, because the lizard's sustenance is going to come from inside your house now. Next slide, please. And so we have to talk about coexistence with them, which means that the architecture that needs to be designed has to understand, in this case, the patterns of migration and the ecological balance that it needs, because without these birds being able to live in this area, we do not even know what kind of impact it will have on the city. One of the fascinating things about the Margala Hills is you will actually find fossils of sea species, because the Himalayan range itself is the seabed that has risen up, right? So it was not uncommon, even in the last few decades, to sometimes run across a fossil which was from the seabed or from some kind of marine life. Which is why this also needs to be multidisciplinary. And the thing is, architects have become aware of a lot of sustainable practice, but it feels like we're constantly hitting our heads into a wall. And so it's so important to have engineers and policy makers and all these material makers and people who specialize in biology to make teams and to help us out in making these solutions properly. We have been creating architecture for animals since a very long time, right? We've been domesticating them since the moment that we kept the first dog or wolf, or the first time that we kept horses in our stables, the first time we kept a few chickens or goats to ensure that, you know, we kind of get a cyclic sustenance from them as well. And so this is not an uncommon thing, but perhaps we need to be a little more selfless and bigger than ourselves, because these problems are now urgent and they need to take into consideration our own livelihood as a larger part of the world. We cannot be the dominant species anymore. So we have to give agency and empowerment to a user that is not human anymore. And there's a lot of recent research on it. I really hope you look it up. A lot of universities are now doing research on making architecture that is for animals, and not just, you know, the pets that live in your house, but the animals that are literally affected in the areas that they live in. So what can we do as indigenous solutions in order to help these out? I have 3 case studies. Next slide, please. So this is the Dove Code by Oscar Niemeyer, very well-known architect, and a very, very good case study. The Dove Coat was created in particular, well, for doves, right? One of the pros of this is that it acts as a kind of awareness-creating monument. So one of the things that it does is that. The other thing is it sort of behaves as a module. What you see over here is that, you know, a very aesthetically pleasing form, and then you have these little grooves on the side where pigeons have complete agency to go in and come out every time without being affected by any human beings, whilst sharing the same space with them, right? And a lot of cons in this as well, because, for example, the maintenance of this structure, because, you know, hum log maintenance se bahut obsessed hain. The maintenance of the structure may be problematic, the scalability of it and the flexibility of it. Repeating this as a module in some other place could be problematic. However, one of the insights that it gives us is that it can create awareness, first of all, and it shows us the possibility of being able to inhabit all these other creatures very, very easily. Next slide, please. This is the Bat Tower by Joyce Wong. Professor Joyce Wong teaches in New York in a few universities, and this is a project that she made with her students. Some master's students got together and they built this Bat Tower to look into a couple of problems that the bat species of New York were facing. This included, well, general endangerment of their species, and then a particular disease that was being caused by the lack of bats in that space. Because what the bats used to do is, as I'm sure a lot of you are aware, when little microbial things are feeding onto each other, we're not even aware of what they're doing, right? What they were doing was they were feeding on this particular insect, and due to the bats being endangered and leaving the place, that insect was again causing that disease to spread. It was a very old disease, like a century-old disease. And in order to create awareness about
that. This is a bat tower that they built. This was very practical and feasible in the sense that it did not take a lot of money. The sizability and the scale of it was wonderful. Perhaps the construction and the repetition of it would have been problematic, but as you can see, the bat droppings in the picture in the center, bottom center. When you see a species creating a mess inside a place, you know that they are now comfortable with it. So in that manner, it was successful. One of the biggest things about this case study is that humans are unable to reach into the bat tower to affect their behavior or to scare them. So flight distance ka issue bhi nahi rehta. So these are some things that we can take forward from this case study as well. Empowering that particular species and letting it have the security. It is not about putting them in a place where we can touch them or have fun with them or make an Instagram reel or a story to show that we have this pet now. It has to grow bigger than that. It has to grow larger than that. Next slide, please. Thank you. And this brilliant project this brilliant project is the Vulcan Beehive by Snohetta. I hope I'm pronouncing that correctly. What they made was 2 modules. Well, this is mostly out of different versions of wood. The top and the inside and everything that is on the inside as well. You can see a cross section of it. One of them houses 160,000 bees. And 2 of these modules are set up on top of the building at the architecture office that has designed this. Snohetta office ke food court mein hai ye. And what it does is that because they put a lot of planters and flowers around it, it ensures that the bees are around that area. They have all these flowers for pollination, and then they inhabit this. And it has really helped in keeping the bee population of that area intact. Because again, if anybody is not aware of this, bee populations are in endangerment all over the world, and they should not be. That is one of the biggest danger signs of a climatic collapse, because bees literally make the world go around. And so for one of these modules to inhabit 160,000 bees at a time, it is an extremely successful project because it has actually made the area around it greener as well because of all the pollination that's going on. And then the honey that is created within these is actually shared for free around the community in that area. And they also have a homeless shelter near that area, so they donate a lot of the honey to that area as well. Right, so design in that sense, I will actually quote Miss Lari here, who I'm a big fan of. Design needs to become democratic in that sense as well. When we design things like these, they become example modules for us because ye practical bhi hai, it is implementable, it is happening, and it is also giving back to us. Everything is not about our profit, but if we need to talk about what we gain from it, then this is one of those things. We do gain from all of these case studies in a larger context because on a micro level, we're not even aware of how much they give back to us. I am sure a lot of you have noticed in the past decade that Islamabad has become a completely different city. It is not as beautiful as it used to be. There is a lot of construction. The AQI level has risen like anything. Like Lahore mein, if it's around 400 to 500, it's now easily 300 to 400 in Islamabad as well. Around the areas near the express highway and the new highways and the Srinagar highway, all of these constructed areas. And not only that, we have a CBD strip in the blue area, which is only about a few hundred feet away from the Margala Hills, which is also problematic. We have had these huge green patches where we have built buildings like the Centaurus and all of that. And all of these things were not even in the original CDA plans. So clearly, there's something that we're doing along the way where we're changing our decisions and we're taking over the green spaces that are going to affect the flight distance of these birds. And these birds are now in Islamabad also, like other cities in the world. They crash into buildings, they get themselves hurt, they don't know how to go back. The intense lighting in all of these areas does not help them in kind of trying to locate and navigate their way back towards their own natural habitats. And there was a research that I conducted as a part of this as well with different materials of boxes just to see how many birds would actually come to it and how wouldn't it. The statistics were really, really bad. One of the problems with that study was that I couldn't just put a few structures on for 2 days and expect to get good results. So that's something that's going to become better in the future when I repeat that research. However,
One thing that I realized was that birds are never going to come to any patch of area and actually be comfortable with it unless they have a huge flight distance, right? And I'm sure a lot of you have seen this. Something like a crow would fly away slower if you go to it, right? Because a crow can attack you, a crow can defend itself. However, something like a very, very small little bulbul, and the Himalayan bulbul, who is now going towards endangerment, is going to fly away much faster. It's maybe going to wait for you to come at 20 feet or even 15 feet, then it's going to fly away. And you will see this behavior change inside places like the Lakeview Bird Aviary. If you've ever been to a bird aviary, birds have very different behaviors over there. Because inside an aviary, a bird is much more comfortable because it's their dominated space. And so the flight distance becomes kind of shorter, right? So in order to give them those little pockets of space in our urban areas, it is extremely important to give them that proximity or that flight distance and to create modules that allow for that flight distance to work out. Thank you. Next slide, please. And of course, an example that I just could not leave out, but it was too general and too vast. It is no old thing in Eastern architecture anywhere in the East, in East Asian, Southeast Asian, African, Middle Eastern. Bird coves, pigeonholes, bird niches, ये बहुत पुरानी practice है, ये हमेशा से चलती आ रही है. And perhaps due to our obsession with, post-industrial capitalistic building, creating all these new towns or making modules that are economically feasible rather than helpful to the environment, we've let go of a lot of our heritage and not necessarily in a good way. So I personally am not a fan of that aesthetic either, and I don't condone bringing that aesthetic back. But surely a community of architects can come up with an aesthetically acceptable version of pigeonholes and bird niches again. And just to integrate that small little thing in our houses one more time, right? इसके पीछे भी एक पूरी study है, Middle East में, there are a couple of architects who are looking into kind of, क्या कहते हैं? Okay, sorry. Kind of looking into like a modern version of building so that these pigeonholes could join, become a part of the newer aesthetic. Next slide, please. This will be the final one. Additional insights just include ideas, basically what I just said. Having glass that birds can see, having fenestrations or having openings, or just general structures like that which allows them to feel secure and dominant. Next slide, please. And we already have these ideas that are being, implemented, right? So within all of this context, we need to realize that this architecture does not just need to include fancy 3Ds where we create things that look nice in 3D. We can very easily implement these little things in the architecture that exists, in the architecture that we're creating right now. And we need that necessary paradigm shift towards an indigenous or almost a transcendent design, because this is bigger than us. And as a species that dominates the planet and calls itself so intelligent, we should be able to realize that everything else that is on the planet is actually giving back to us as well. And so we need to invest in it rather than putting profit on top of it or giving, क्या कहते हैं, giving more importance to, well, dare I say this, security issues or decisions made by the military or policy making or certain things like that that have a large impact upon all of these things, and environmental issues specifically. There's a part of my paper that particularly talks about material that is very friendly and into looking at mycelium fungus as a material that can be used for building architecture in the future. But at the end, if I were to conclude this, I would basically say that we cannot call ourselves an intelligent species unless we are ethical, empathical, and sustainable about this particular problem. And in order to cohabit this space along with the birds that we have, the last slide shows that we are already dreaming of these possibilities and thinking of these ideas. But one of the major issues I think that we always face is कि अगर हम 5 फुट के कैंटिलीवर आगे पीछे करते रहते हैं, and we can't
cross a certain limit for parking, and then we're constantly thinking about how many floors we're allowed to make and how many we're not allowed to make. We cannot focus on these actual issues that we need to do. And one last thing that I really want to mention, if we have PCAT representatives as well, is that in the future world, we're talking about sustainability. We really need to let go of the idea of having our students, our future architects, do a thesis that requires 100,000 square feet. That is obsolete. I personally believe that. And I think they need to start doing research on micro levels and start designing modules that have design research and have strong ideas behind them. आप research को देखें, आप ideas को देखें, आप देखें उनकी implementability कैसी है. But please stop focusing on quantity being quality. That large of a footprint for every last thesis is not what we should be teaching our future students. It does not align with the SDGs. It does not align with the future that we should have. And my time is up. So thank you all for listening. I want to end with basically, I'm a researcher and I'm an academic, so I just want to say that all the architects sitting over here, in a way, I would like to call all of you to action. These modules are very implementable, and I hope that you take this forward and actually think about it and start to talk about it in your offices and implement it as well. Thank you so much. Thank you, ma'am Manal. Next up, we've got architect Mansoor Ahmed Qureshi. Architect Mansoor Ahmed Qureshi graduated from National College of Arts in 1999 with honor. He is the principal architect of his firm AFKR Associates since the year 2000, with a diverse portfolio and clientele including Asian Development Bank. He is one of the active members of our community, advocating for recognition to our profession, devising national architecture policy, integrating the integration of teaching, practice, and research. He has served as an executive member PCAT for Khyber Pakhtunkhwa. He's a social activist and has several campaigns on cleanliness and sustainable social infrastructure to his credit. He is the author of several papers. The topic for his talk is Catalysts for Sustainable Sustainable Built Environment. Now I'd like to call upon architect Mansoor Ahmed Qureshi to come on stage and share his thoughts. I would like you to give him a huge round of applause. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a great honor to be at this August forum where we are talking about the sustainability and a sustainable future. Next, please. So, in fact, the title is Architects as Catalysts for Sustainable Built Environment. The presentation or this paper is in three parts. Part first is about the role of architect in built environment. And in the second part, we will be talking about the other stakeholders of the built environment. And in part three, we will be looking into a plan of action, how we can proceed into it. So my first question, since a lot of architects sitting here, I would like to ask the audience, who is or was the first architect? Can anyone from the audience can tell me? Who was the first architect? Who is or was the first architect? Great. The first architect, who is the grand architect of the universe, is the first one. And when it comes to, and which was the first building, by the way? Exactly, Kaaba. Next. So, the first architect of the universe,
on this planet is Allah subhanahu wa ta'ala himself. So this is the relevance that our profession has. I mean, the ultimate creator is the grand architect of the universe, and he built the first structure at the heart of the earth on the planet, which is Kaaba. So this is a blessing and an honor and a responsibility to be an architect. Architecture is such a wonderful profession and wonderful field which combines art, science, and engineering all together. So, how can we define architecture? As an example definition, architecture is the art and science of designing and construction of total built environment, which includes urban design, landscape design, building design, to the micro level of construction details, interiors, and furniture. So in a way, it involves everything. So what does it mean to be an architect? And what are the strengths that we are having in this profession as it relates to the ultimate creator, what we are blessed with? So there are 5 things and 5 strengths which are specific to this profession. Number 1 is, we have seen the work of Madam Yasmin Lari and many architects. Architects are social activists by the very nature of their profession. Social activism is at the heart of our profession. Number 2, architects are trained for system solutions. Every building that we design is a system. With a set of building program, you have physical resources, you have material resources, you have natural resources, you have financial resources, you have human resource, a lot of stakeholders to the system. So every building is a system solution. So we are trained for system solutions and systemic approach. Number 4, architecture is a very strong medium of education. You can maneuver people behavior, the way they think, the way they see things, the way they walk, and the way they learn. Number 4, and because of this, architecture has the power to transform society. And that power is in our hands. And number 5, architects are visionaries. We have the ability to look into the future before it happens. So this is something very unique. Since we are talking about the future, so the title of this forum is Sustainable Future. In fact, if we shall put it more rightly, sustainability is the future. It's not sustainable future anymore. So the whole world at United Nations came together in 2016 and 17, and they have set certain goals. How can we achieve sustainability? So there are 17 goals. Most of us must be aware of it. I'll just talk about 2 goals which directly relate to us. And these goals, goal number 11, it's sustainable cities and sustainable communities, which Madam Lari was talking about, and she has done some tremendous work on that. And goal number 17, and that is partnership for achieving these goals. Since we are talking about the partnership, as a global community of architects at UIA 2023, we are partnering with the UN, and we are signatory as a UIA Commission on the Sustainable Built Environment and Sustainable Development Goals. So we are heading and we are leading that responsibility. What the UIA Commission has done, it has developed a guideline for architects around the globe for the architecture, what the world is expecting from us at a global level, at a macro level and at a micro level. So there are 3 expectations from us
whomsoever at whatever we are operating. Number one is, since we are trained for system solutions, so the UN and the whole world is looking at us to give them solutions that make it possible for us to have sustainable cities and communities in the future. Second, architects can facilitate open dialogue and work in partnerships. So this forum is one of the testaments, the direction that we are leading to. And number third, to encourage authorities, and I am happy that the Honorable Secretary was here for housing, to make the regulation necessary for implementation. Now, who are the stakeholders of the built environment? Is there architects or engineers or doctors? Any living organism on this earth is a stakeholder. And the previous presentation, our architect Manal Abdullah showed her research. I mean, the birds are one of the stakeholders. So each one of us is a stakeholder. Now, there are 7 layers of stakes. Each one of us, as an individual or organization, has some stake at some level. It can be at academic level, at a practice level, at research level, some statutory and regulatory level, some at legislation level, some at policy making, and the last at implementation and enforcement level. This is a list of some of the important stakeholders of the built environment. And on top of it is Pakistan Council of Architects and Town Planners, because of our leading role, and then IAP, then PEC, and then Institute of Planners, PEPRA, HEC, National Energy Efficiency and Conservation Authority, Sustainable Development Policy Institute, local government, and so on. Then who are the key stakeholders? These are the key stakeholders. Madam Larry, and in the other presentation we heard about Madam Shahja Qureshi. She told about the alternate materials, alternate energy solutions. There is an organization, body of the government, Alternate Energy Development Board, which is just working on it. And similarly, NECA, National Energy Efficiency and Conservation Authority, which looks for conservation of energy. Then, coming to the role of PKP, we all know what PKP is doing. It's doing a wonderful job for the profession. But in response to the built environment, what are the areas that PKP need to focus or we can look into and we can play our due role? So the first one is, everything comes from a policy. Built environment and sustainability has to be at the heart of our national architectural policy, which we yet to have to develop. Then we have to look into the curriculum. And third is define design standards for building design and urban planning, which includes the building, landscaping, and public spaces. For example, one of the major areas that is thoroughly neglected in our academia and our practice is the street design. Whose job is to design a street? And how many architects are engaged in designing the street as a public space? No, the concepts are changing throughout the globe. The name of the road is now replaced with the street as a public space. And there is no global street design guidelines. We need to look into that to have our own guidelines for the street design. And then capacity building of architects, professionals, and regulating procurement of architecture and town planning services, which architecture is the only profession, or maybe among one of the few professions, which believes in talent and transparency, intellectual and competition. So we need to look into that. And there are some ambiguities in some of the areas. I'm glad that Mr. Farman is here from PKP, that the planners, engineers, and architects, there are some ambiguities in their due roles, which all of the time when we sit in our talks, we do discuss about it, that need to be taken to the next level to a formal conclusion. And then
Madam talked about the bylaws. Madam Lari talked about it, and Madam Shahja Qureshi talked about it, and the other presentation. Who is responsible for the bylaw? So we need to have uniform bylaws regarding its formulation and its application. It's the responsibility of the PKTP. Unfortunately, we do not have any bylaws for the waterfront development. I mean, how you develop your waterfront. Then for the heritage, which Madam Lari has the Heritage Foundation, and a lot of us are interested in our heritage. When it comes to heritage, our bylaws are, there's a disconnect between our Antiquities Acts and our bylaws. And then response to topographic. I mean, one bylaw for a hilly area and for the plain area, and urban, suburban, and rural, it all varies. So we have not actually looked into that. Then guidelines for building regulations and for planning bylaws, because planning is a separate domain and building is a separate domain. Then we need to develop mechanisms to ensure design quality and design control. All of us talk about building control. What about design control? You have a very great design, and when it comes to implementation, there are the engineers, there are contractors, there are the owner. So how you have control over design, how you ensure quality over there. And then the last area is the building commissioning, unfortunately, which is also lacking. How you can say that this building is livable, it's habitable, what standards you are following. Unfortunately, this is one of the areas where we need to put our authority in. Then coming to the role of IAP as a stakeholder, regarding the syllabus, we have a very, Umar Saeed Saab, I'm glad he is here, the Board of Architectural Education. Of course, we need to have the sustainable built environment in our curriculum. Then IAP already assisting, it has to extend its more strength into the PKTP indoors. And IAP, as an international face of architects of Pakistan, we can make collaborations with experts, which will include faculty training and students and maybe some faculty exchange programs. Then coming to PEC. PEC formulates the building codes. Building codes for energy efficiency, building codes for safety, and earthquake building codes. But there is a lack of coordination between PKTP because we design building, and we are not aware, we are not equipped or educated on those codes. So, I mean, there is a disconnect between the two. So, we need a coordination between the two bodies. Then there is a sort of a confusion for architectural consultancy services. Architects, there are schools which are giving degree of architecture, and there are schools which are giving architectural engineer's degree, who are basically trained for engineering systems, but no, they are claiming their share as equal to architects accredited from PKTP. So there is a problem of recognition, and there is a problem of Act, PKTP Act and Engineering Act. Then the building commissioning, since engineers have a very broad role, so we need to have a collaboration between the two. Then building control, as we talk, architects, unfortunately, are still struggling. Even architects sitting in CDA, who are maybe representing here, and Park PWD and other departments, they are still struggling to hold their authority for the building control. Unfortunately, we have different situations in different areas, but this is one of the areas which is badly affecting our built environment due to non-compliance of our building bylaws. And then regulate building control and regulate development control. Then coming to the developmental model, we all know development is a non-evitable process. You cannot stop development. But what is our developmental model? So the Planning Commission, or P&D, which is the brain of the public system, has to look into our developmental model. Unfortunately, our developmental model is project-centered. It needs to be planning-centered. We lack planning, and we are just relying on projects. Either it's CDA or it's like capital cities or all. Fund came,
and you have a project without planning and you just start executing it. So all development has to be planning centered, and secondly, it has to be public centered. What do we mean by public centered? Public is the main stakeholder for all public related projects, and for that we have three major criteria. Number first, planning with public consultation. Number two, there is a trust deficit between the system and the public. So legislation for public facilitation, take public into confidence. And third is implementation with public participation, take public as a partners in implementation. And of course, all of us know that we have been struggling to resolve our issue of procurement with PEPRA, because PEPRA is responsible for regulating procurement of architectural services. Unfortunately, we lack on their side as well, because non-architects or non-professionals are eligible to do architectural work. So we can see the adverse impacts on our built environment because of this. Then at policy level, we have HDPI, and at energy efficiency, we have NICA. And Ministry of Housing, since we are an attached department to the Ministry of Housing, so maybe we can, we are going to use that channel for all our endeavors, and we can develop guidelines for sustainable housing. So, coming to the conclusion, what are the challenges? When we see these stakeholders, there is a stakeholder for each and every discipline of the built environment, there are 4 challenges. The first challenge is lack of collaborative strategic framework, because of which we have coordination gaps. It's within the departments of the government and other bodies and the government departments. And second is lack of legislation. Legislation for the built environment, which can bind each stakeholder to its mandate and define its obligation and its due role. And third is the loose enforcement framework. Loose enforcement framework. The loose enforcement framework. And fourth one is lack of awareness. So the action plan that we have here is, first of all, there are 5 actions to be taken from this platform. Abdullah, I need your, chairman, I need your attention. This is very important. This is just a conclusion. So there are 5 things that we need to do. Look into syllabus for built environment. Since Chairman BAE is here, I'll request him. This is his domain, the first one. Second is put built environment at the heart of CPD program. Third is for the IAP to launch Sustainable Built Environment Recognition Awards. We can take a start from here. The people who are contributing to the sustainable built environment in any capacity, we need to recognize them. And fourth one is to hold a round table of key stakeholders of built environment. This can be PKP, IAP, PEC, and so on. And the long-term solution is to have a built environment council. Now, what is a built environment council? These are just last 2 slides. Please bear with me. Thank you. One is from UK, where there is a House of Lords, which lead the whole country. There is a Built Environment Committee, which look into all the issues of the built environment. And in South Africa, there is Council for the Built Environment. So what are the objectives that we need to pursue for the built environment? Number 1, to promote and protect interests of the public and built environment. This is the first objective. Second is promote and protect sustainable natural and built environment. Number 3, promote human resource development in built environment. And number 4, ensure participation of built environment professionals in integrated development. Number 5, promote sound governance of built environment through legislation, qualification standards, and guidelines. And number 6, to ensure
uniform application of guidelines set by the council. This is for the government, and at a personal level, at a local level, we just have to take a very small initiative as a first step in this direction, and that is the establishment of a built environment center in the name of Daira. So all of you are welcome to join this platform, and thank you very much. Next up, thank you, Sir Mansoor. Next up, we would like to ask the audience if there are any questions for the speakers. Do you want the mic? The mic up there. Hello. Okay, we'll have the session later. Next up, I'd like to call upon the convener of this forum, architect Mehreen Muzaffar, to come on the stage and host the panel discussion. Thank you. Thank you so much, all of you. Now we have a last session. We have a panel discussion, which is comprises of different architects from the different fields, and we have our planners. We have tried to have a collaborative forum with the Ministry of Housing People, PPAC, and PCAT-P. Now I would like to introduce the moderator of today's panel, Architect Tahir Hatak. He is a CEO at Pradhan Consultant. He is a founder and a member of Curriculum Review Committee of HEC. His expertise is in design, management, and education. He is shaping the future of the architecture. Architect Tahir Hatak, please join us on the stage. Now I would like to invite Dr. Asghar Naeem. He is a chief planner at Federal Government Housing Authority. He is an urban planner with experience of more than 25 years on his credit. He got his postdoctorate from MIT, USA, PhD from Hong Kong University, MSc from AIT Bangkok, and BSc from the University of Engineering and Technology, Lahore. He has worked with the United Nations University projects, Swedish International Development Agency's projects on sustainable urban development. He has also taught at ComSet University, Islamabad, NUST. Currently, he is working as Chief Planner with the Federal Government Employees Housing Authority, Islamabad. Please, Dr. Asghar, join us on the stage. Our third panelist is Dr. Ghulam Sarwar Sindhu. He is a Vice Chairman, Town Planning, PCAT-P. He has done his PhD in Urban and Regional Planning from the NUST. His MSc in Urban Development Planning from the University College London, UK. He has done his BSc at Regional Planning from the UET Lahore. More than experience of 35 years in urban development planning. He has expertise master planning, sustainable urban planning, and building control. He is working on the civic management, affordable housing, and urban regeneration and slum upgradation projects. Please, I would like to welcome the President of Institute of Planners, Pakistan, Dr. Ghulam Sarwar Sindhu. Our next panelist is Architect Miraj Ahmed Azim. He is a senior architect at DG Office, Park PWD, Ministry of Housing and Work. He has experience of private practice, and since now he's working at the DG Office, Islamabad. Please, Architect Miraj Ahmed Azim, join us on the stage. Our other panelist is
Architect Farmanullah. Architect Farmanullah is a practicing architect. He is a current executive committee member of PCAT-P and practicing his own office at Islamabad. Architect Farmanullah, please join us on the stage. Guys, I need a lot of huge applause for this panel discussion. This is all for us. Jitne bhi ho hall mein, show where you are sitting. Thank you. Thank you, Farmanullah. Now, over to you. Thank you. मैं arrange करती हूँ. जी. प्लीज़ सर सब तशरीफ़ रखें, बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to. Okay. So, as all of you know, that a very, I would say, heavy session on sustainability has been taking place the whole day, and a lot of discussion has been carried out. और एक बहुत important चीज़ जो कि sustainability के हवाले से बार बार discussion के अंदर आ रही थी, वो ये थी कि कुछ vernacular होना चाहिए, indigenous होना चाहिए. तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर रिवाइव करें तो अपनी लैंग्वेज भी रिवाइव करें, अपनी ज़बान में बोलें, उर्दू में बात करें, तो और भी अच्छा होगा और समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगा. इसलिए कि अवेयरनेस जो है फॉर जनरल पब्लिक वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और सिंस दीज सेशंस आर बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, तो जितनी भी जनरल पब्लिक है उनको ये कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी हो सकेगी. तो इंट्रोडक्शन तो हमारे सब साथियों का हो गया है. हम बात शुरू करते हैं जो हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी मंसूर साहब की. Sorry, Tahir, एक interruption है. I have missed one panelist, Nawazish Iqbal साहब. Sure, please, yeah, please. I would like to invite Nawazish Iqbal. He is a MD at the PPAC-P. Please join us on the stage for a panel discussion. Apology for missing you out. Sorry, sir. आइए सर. जो हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी मंसूर साहब की, उसमें उन्होंने बहुत क्रिटिकल बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे कि जो इस सेशन का जो टाइटल था कि आइडेंटिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी रिसर्च भी हो रही है, पूरी दुनिया में बातचीत भी हो रही है, हमारे आर्किटेक्चरल और डेवलपमेंट फर्टर्निटी जितनी भी रिलेटेड है, सब इस हकीकत से इनकार भी नहीं कर रहे, इसकी हकीकत को जान भी रहे हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मुश्किलात हैं. ज़ाहिर बात है, सबको उसमें प्रॉब्लम्स हैं. और उन्होंने उसके लिए किसी फ्रेमवर्क की बात की कि एक फ्रेमवर्क हो जो कि हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सके. एंड आई एम ग्लैड कि हमारे यहाँ पे एक वेंडर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि हम भी उस दायरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के अंदर मटेरियल दे रहे होते हैं. तो मैं आप सब पैनलिस्ट के ऊपर एक यही क्वेश्चन पोज करता हूँ कि ये जो फ्रेमवर्क जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया और जो बॉटल नेक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, तो आप कितनी हद तक इसमें इसको सही समझते हैं और उसमें फर्दर अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके ऊपर अगर आप बात करना चाहें. विल स्टार्ट विद सिंधु साहब. डॉक्टर, जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो मैं शुरू करूंगा कि हर जो भी डेवलपमेंट है, इट इज़ अबाउट द बिल्डिंग या शहर या टाउन, तो सबसे पहले इसका होता है लेजिस्लेशन. क्या इसकी
लीगल फ्रेमवर्क की बैकिंग इसको है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात करूं तो CDA ऑर्डिनेंस 1960 जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है। और अगर आज भी देखें, अगर उसके 60 साल गुजर गए इसको बने हुए मास्टर प्लान को, even today it is very much relevant to the sustainable planning and development, because it provides the powers to the local authority to frame and review and revise regulations to cater for the recent trends of development and construction. लेकिन simultaneously अगर मैं थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा बेयर मी आउट, कि जब हम अगर आप एक हाउसिंग से शुरू करें, एक घर से या किसी बिल्डिंग से, जिसका लास्ट प्रेजेंटेशन में ज़्यादा जिक्र था, एक तो मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूं कि उन्होंने जब स्टेक होल्डर्स की बात की, उन्होंने कहा आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और डॉक्टर्स, जबकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टाउन प्लानर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इसको चूँकि मेरा एक्सपीरियंस टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल दोनों में है, मैं DG बिल्डिंग कंट्रोल भी रहा, DG प्लानिंग भी रहा CDA में, उस हवाले से मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे बात करता हूँ। अगर कोई टोटल एक टाउन या नेबरहुड या सिटी, अगर उसकी अपनी प्लानिंग सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल जो कॉन्सेप्ट उस पर नहीं प्लान किया गया, आप जितना मर्जी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर लें वो अपनी सस्टेनेबिलिटी लूज कर जाएगा। जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन आप कर लें उसकी वो इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस नहीं रहती। मसलन अगर 10 फुट की गली है, उसमें कितना कच्चा मटेरियल यूज़ कर लेंगे, कितना कच्चा डिज़ाइन आप बना लेंगे। जब हम सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें एक हायरार्की की जो है उसको देखना होगा। उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, प्रोफेशंस, लेजिस्लेशन और साथ प्रोफेशनल्स। सर, इसी में एक ज़िमनी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि CD ऑर्डिनेंस को या इस्लामाबाद को ऑलमोस्ट 60 साल हो गए, तो हमारे पास कोई इस ऑर्डिनेंस या लेजिस्लेशन में या किसी आपका जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग और डेवलपमेंट का, उसमें कोई मेकैनिज़्म है कि हम सस्टेनेबिलिटी को गेज कर सकें या कोई इंडिकेटर्स हों कि हमें पता लगे कि हम इस एस्पेक्ट पे डिक्लाइनेशन हमारा हो रहा है या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या अगर हमने ऊपर की तरफ जाना है तो हम किस तरह से जा सकते हैं। तो इस तरह का कोई फ्रेमवर्क के अंदर कोई गुंजाइश है इस वक्त, आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल। इसको एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो CD ऑर्डिनेंस है, इसको मेरा ख्याल है कि हम मेजॉरिटी ऑफ अस हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है। तो चूंकि मेरा बहुत लंबा साथ है इस ऑर्डिनेंस के साथ, तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इंसाइट हो इस भी। पहली बात तो ये है कि जब 1960 का ऑर्डिनेंस, उसमें कहा गया कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सक्लूसिवली फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल साइट, और ये लेजिस्लेशन आज तक इंटैक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब डुअलिटी ऑफ कंट्रोल आ गया है कि एक दो अथॉरिटीज़ और बन गई हैं जो कि अभी तक इसको रिपील भी नहीं किया गया। तो उनकी वजह से अब आ गया कि इसकी जो प्रोविज़न है 11, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वुड प्रिपेयर ए मास्टर प्लान एंड फेज डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल। अगर हम मास्टर प्लान को देखें तो मास्टर प्लान ने रो हाउसिंग के लिए भी आपको जगह दी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए भी दी है, उसने आपको ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स दिए हैं। मैं 1960 मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ। उसने आपको कंपैटिबल लैंड यूजर की पूरी रेंज दी है कि आपने रेजिडेंशियल भी बनाना है, आपने उसके नेबरहुड फैसिलिटीज़ के लिए गाइड किया, उसने कम्युनिटी कोर के लिए जिसको हम उर्फ में मरकज़ कहते हैं, फिर आप CBD की बात करें, बिलू एरिया जिसको कहते हैं, दैट इज़ रीजनल डेवलपमेंट सेंटर, फिर आप इंस्टीट्यूशनल एरिया की बात करें, आप ऑफिस बिल्डिंग की बात करें, आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें,
So it provides the master plan, 1960 master plan provides a wide range of compatible land uses, जिसमें रिक्रिएशन की बात भी हो रही है, ग्रीन एरियाज की बात हो रही है. तो सबसे जो हम जो कंपेयर सस्टेनेबल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें होता है कि एक तो लैंड यूजेस की कंपैटिबिलिटी आपस में हो, दूसरा ये कि उसकी डेंसिफिकेशन हो. ये आजकल पूरी दुनिया में स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अर्बन सप्रॉल का है. अर्बन सप्रॉल को डिफाइन किया जाता है कि जी वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स होती हैं, मतलब डेंसिफिकेशन नहीं होती. लेकिन मैं कहता हूँ कि अर्बन सप्रॉल जो है, जब ये इसका लिंक हम कहें इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है. और इसकी बेस्ट एग्जांपल इज इस्लामाबाद में फिर कहूँगा. सो मास्टर प्लान इस्लामाबाद का जो है दैट प्रोवाइड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सपोर्ट्स इट. अब मैं रेगुलेशन की बात कर रहा था. फिर दूसरा उसका सेक्शन है 51 सीडी ऑर्डिनेंस का. उसमें कहा गया है कि अथॉरिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मास्टर प्लान रेगुलेशन टाइम एडगन पीरियडिकली रिव्यू कर सकता है और रेगुलेशंस बना सकता है. उसकी एक एग्जांपल है कि 1992 में हमारे आईसीटी जोनिंग रेगुलेशन बने, 2010 में रेगुलेशन बने, जिनका मकसद ये था कि चूंकि पहले डेवलपमेंट सिर्फ हमारे म्यूनिसिपल एरिया तक महदूद थी, 2010 के जो हमारे रेगुलेशन उसमें हमने जो पोटेंशियल एरिया थे जोन 4 के, जोन 5 के, वहाँ पे इसको लेके आए. और उसमें फिर सीडी को पावर दी गई कि आप हाई राइज जा सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर उधर डेवलप कर सकते हैं. मुझे याद है कि मैंने एज डीजी प्लानिंग 6 रोड्स जोन 4 और 5 में अप्रूव करवाए थे 600 फीट के. सो व्हेन इट प्रोवाइड्स compatible land uses and room for framing of bylaws and periodical reviews to cater for the needs, to cater for the issues of modern development trends. सर मैं चाहूँगा डिस्कशन को भी थोड़ा सा हाउसिंग की तरफ लेके आते हैं कि अगर आप सर हाउसिंग के हवाले से जैसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन का, यास्मीन लारी साहिबा ने तो मेरे ख्याल में ईयर 2000 में जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है, उसको खैराबाद कह के उन्होंने हाउसिंग फॉर द पुअर और आर्किटेक्चर फॉर द पुअर और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ के लिए काम करने की बात की. और फिर कुछ उन्होंने मटेरियल सजेस्ट किए कि अर्थ, लाइम एंड बैम्बू. तो उस हवाले से एक हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आया. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सर जो हाउसिंग से हैं, अगर आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से क्वेश्चन, मैं ज़रा पिछले क्वेश्चन एक को आपको रिस्पॉन्ड कर लूँ ज़रा. कौन सा? जब हम बिल्डिंग कंट्रोल की बात करें सस्टेनेबल की, आई एम सॉरी फॉर दिस, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे. दूसरी बात यह है कि आपको एक हायरार्की को देखना है सस्टेनेबिलिटी में. जब देखते हैं सबसे पहले है कि जब प्लानिंग पैरामीटर्स कौन डिफाइन करता है, दैट इज़ द जॉब ऑफ द टाउन प्लानर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्लान एट सिटी लेवल, देन सेक्टर लेवल. हम उसमें डिफाइन करते हैं कि किसी ऐसे एरिया में जो बिल्डिंग्स बननी है उसका यूज़ क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी होगी, उसको मिक्स यूज़ होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, प्लस उसके सेटबैक्स क्या होंगे. सो सबसे पहला स्टेक होल्डर हुआ टाउन प्लानिंग प्रोफेशनल एंड टाउन प्लानर. डेफिनेटली. देन इज आर्किटेक्ट कि जी जिसने उस स्पेस को फिर बड़ा एफिशिएंटली यूज डिज़ाइन करना है. देन कम्स स्ट्रक्चर इंजीनियर जिसने उसकी तय तो दूसरी चीज़ों को देखना. सारी एक टीम के तौर पे तो काम करते ये हैं. हमें इस हायरार्की को देखना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट. तो इसी हायरार्की को जब हम प्राइवेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत करीब हो जाएंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जी थैंक यू वेरी मच. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? फर्स्ट मैं इससे स्टार्ट करूंगा. मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में, ईच एंड एवरी वन इज स्टेक होल्डर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक इंडिविजुअल से लेकर एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक एनजीओ, देन गो ऑन टू इंस्टीट्यूशंस और ऑल द डिसीजन मेकर्स. जब हम सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं कहते हैं 3 डायमेंशंस हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक. But I would prefer the definition that has also other tools, that is urban governance and the technology. अगर urban
गवर्नेंस, पर्टिकुलरली गवर्नेंस एंड अर्बन गवर्नेंस सही ना हो, जब हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं, पर्टिकुलरली लुक एट इस्लामाबाद, वी हैव प्लेंटी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, वी हैव पॉलिसीज, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो गालिब आ जाते हैं। इसलिए अब हमारी ओपन स्पेसेस कन्वर्ट हो रही हैं हाउसेस में, ओपन स्पेसेस कन्वर्ट हो रही हैं डिफरेंट यूजेस में। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ एवरीवन्स ड्यूटी जो उन्हें निभानी है। नोट लेट्स टॉक अबाउट हाउसिंग। बिल्कुल सर, पहले कंसेप्ट ये था कि जी देयर शुड बी डिफरेंट जोन्स, ये कमर्शियल जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये रेजिडेंशियल जोन है। अब ये पुराना कंसेप्ट है, पूरी दुनिया में अब मिक्स्ड लैंड यूज़ का कंसेप्ट आया है। मिक्स्ड लैंड यूज़ में ये है कि नीचे आपके कमर्शियल हैं, ऊपर बिल्डिंग में आपके ऑफिसेज हैं, देन देयर आर अपार्टमेंट्स। सिटीज़, हर एक सिटी की इकोनॉमिक बेस होती है, और अगर हम अपने सिटीज़ को देखें तो इनकी इकोनॉमिक बेस एग्रीकल्चर है मोस्ट ऑफ द सिटीज़ की, एक्सेप्ट द कोस्टल एरियाज। कराची अगर देखें तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक बेस है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, शिपिंग है। हमारे पास लिमिटेड प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, और आई डोंट नो कि हम प्लॉट पे प्लॉट, हाउसिंग स्कीम पे हाउसिंग स्कीम्स बनाते चले जा रहे हैं, हम अर्बन स्प्रॉल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम कम्पैक्ट डेवलपमेंट और मिड राइज की तरफ नहीं जा रहे। कि हम अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को ही कंज्यूम कर लिया तो देन ये एक फूड रिस्क होगा। तो कहाँ से हम अपनी खुराक लेंगे? हमारे पास घर तो होंगे बड़े बड़े, लेकिन खाने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं होगी कि हम फसलें उगा सकें। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक कि चंद वेस्टेड इंटरेस्ट वो इस तरफ जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को और NGOs को, पर्टिकुलरली एकेडेमिया को, वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन सर हमारा जो सेंसस है डाटा वो ये बता रहा है कि हमारा जो हाउसिंग डेफिसिट है वो मुसलसल एक बैकलॉग का शिकार है, और हर साल जितने हमारा बैकलॉग है उतना ही और ऐड हो रहा है। तो उसका फिर आपके मतलब व्हाट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट? बिकॉज ये जो भी हो रहा है, हॉच पॉच डेवलपमेंट जो हो रही है, जो हमारा फूड बास्केट जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि एक डिमांड तो एग्जिस्ट करती है बहरहाल। तो आपकी क्या राय है कि उसको कैसे कवर किया जा सकता है? यस, आई थिंक मेरे जहन में दो चीज़ें हैं इस हवाले से। एक तो ये है कि जो हमारी जो हाउसिंग मार्केट है और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं बड़े बड़े, वो ऐसे बिजनेस मॉडल की तरफ रुझान है उनका जहां इलीट को सर्व किया जाता है। हालांकि अगर सोसाइटी को देखें, इट इज जस्ट लाइक अ पिरामिड। सो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड इलीट क्लास है, वो एक सर्टेन परसेंटेज है। हमारी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन हाउसिंग सेक्टर दे आर सर्विंग दैट इलीट क्लास, जबकि बेस जो कि वाइड स्प्रेड है वहां पे ज्यादा जरूरत है। सो इट इज स्ट्रेंज कि वो बजाय इसके कि अपार्टमेंट्स की तरफ आए, छोटे घरों की तरफ आए, वो इलीट को सर्व करना चाहते हैं। सर मैं एक सबसे बड़ा इशू ये है। जी बिल्कुल। दूसरा एक इशू मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मैं अगर गाड़ी खरीदना चाहूँ, गाड़ी के लिए लोन लेना चाहूँ, तो बैंक्स मेरे पीछे आएंगे। दे आर विलिंग टू गिव मी लोन फॉर कार, लेकिन अगर मैं घर के लिए लोन लेना चाहूँ वो अवेलेबल नहीं है। कैन यू इमेजिन? मैं अमेरिका में रहा, सो जो ओनर थी जिस घर में रह रहे थे, तो उसने कहा कि सो वी वोंट बी एबल टू यूज किचन फॉर फ्यू डेज बिकॉज आई एम गोना फॉर रेनोवेशन। तो फौरन मेरे जहन में सवाल आया कि मैं इससे पूछूं कि उसने कहा कि मैं बैंक से लोन ले रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे? उसने कहा 0.5 to 1%। आज भी अगर आप अमेरिका में देखें, चाइना में देखें, हाउसिंग लोन पे 3 to 6% इंटरेस्ट रेट, और वो इजीली अवेलेबल है, हर एक को अवेलेबल है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इस मार्केट को कैप्चर किया हुआ है चंद हाथों ने,
जिस आई वजह टोटली से एग्री, बिल्कुल उस तरह से तो तकरीबन कमर्शियल मार्केट में तो हर जगह पे ही जो जाहिर बात है जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको मिलते लोन हैं 30% 40% पे लोन बिल्कुल मिलता है बिल्कुल। तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन की डायरेक्शन जो है वो पीपैक की साइड पे लाना चाहता हूँ सर। कि जो डेवलपमेंट में जाहिर बात है आपका और इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाकी हमारे बहुत सारे यहाँ पे आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंट भी हैं, डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग, हम खुद भी काम करते हैं। तो जहाँ पे हमें जैसे इन डिस्कशंस के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर मटेरियल्स के ऊपर बहुत बात हुई, जैसे आपकी एक प्रेजेंटेशन जो बल्कि यास्मीन लारी साहिबा की प्रेजेंटेशन में ही उन्होंने बताया कि सीमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, बाकी मटेरियल्स कैसे कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम उस एतबार से डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन की साइड पे जाके अगर हम कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहें, तो मेरा क्वेश्चन जो बेसिकली वो ये है कि हमें हमारा फ्रेमवर्क कहाँ पे रोकता है। जैसे हम अमूमन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें अगर आपने कोई मटेरियल जो कि शेड्यूल का हिस्सा नहीं है उसको यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम एज अ स्टेक होल्डर, जिसमें टाउन प्लानर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सब लोग जो भी रिलेटेड हैं, मटेरियल इंडस्ट्री के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो कौन से बॉटलनेक्स हैं जिनको हम एड्रेस करें और हम वहाँ पे जाके कोई कोई डायरेक्शन इसके लिए दे सकते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसके जो, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ भी काम किया है, अभी हाउसिंग के साथ हम काम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के पीके के साथ भी काम करते हैं। तो सर जो पहले भी बात हो चुकी है इस पे कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो हमारे जितने पॉलिसी मेकर्स हैं वो सारे जो ना वो जो हमारे ऊपर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं। हमें इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, टाउन प्लानर्स को सबसे पहले तो मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉलिसी मेकिंग सीट्स हैं वो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करें कि उस पे जो जिस पर्सन की जो टाउन प्लानर के कोई काम है तो उस पर टाउन प्लानर को बिठाया जाए, और अगर इंजीनियर की जॉब है तो इंजीनियर को बिठाया जाए, और अगर आर्किटेक्ट का काम है तो उनको आर्किटेक्ट डिसीजन मेकर हो। हम एक चीज़ बना के लेके जाते हैं सर, हम एग्जांपल दूंगा क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। तो हम एक चीज़ लेके जाते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके आप देखते हैं कि अगर जैसे हम केपी में काम कर रहे हैं तो उसका कल्चर क्या है, ठीक है, और अगर बिल्डिंग का नेचर क्या है, मॉस्क है या हॉस्पिटल है, किस नेचर की है, तो उसकी फील भी ऐसे आनी चाहिए डेफिनेटली। और इसी तरह उसके फंक्शंस है उसको भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट करके जाते हैं, ऊपर एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा होता है, उन्होंने डिसीजन दे होता है। जैसे एक बंदा, हम उसको पैंट कोट टाई बना के हम सामने प्रेजेंट करें और बाद में पता चलता है जब वो डिसीजन जब अप्रूव होता है तो उसकी टाई तो होती है, नीचे मतलब जो ना वो कमीज होती है और नीचे पैंट होती है, तो वो इस तरह की इसकी शेप ऐसे बन जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव राइटली पुट इट, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो और इसमें शायद हमारे पास जैसे इंटरनेशनल कोई एग्जांपल्स हम देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स हैं जो कि किसी भी बिल्डिंग के बनने से पहले उसकी जो भी इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसको असेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आप फॉलो कर सके। सिर्फ वो जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसके और जो फ्रेम होता है फाइनेंशियल फ्रेम, उसी के अंदर फिट करनी होती है बिल्डिंग। जी सर, वो तो एक पिछले दिनों भी प्लानिंग में हम एक मीटिंग हो रही थी पॉलिसी मेकिंग एक बना रहे कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो उसमें मैंने ये बात भी की कि सर जो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है उसका पर्पस ये होता है कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, और हमें ये कहा जाता है कि जी प्रोजेक्ट हो गया, आपने फिजिबल करके देना है हमें, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का पर्पस ये होता है कि हमने बताना है कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट बताने हैं। जैसे सर वो संधू साहब ने बात की कि लैंड यूज़ है तो लैंड यूज़ उसका कैसा है, ठीक है, उसमें हमने सारी चीज़ों को कैटरफा करना है। एक टाउन प्लानर देखेगा, इसी तरह आर्किटेक्ट देखेगा और फिर इंजीनियर देखेगा, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा, तो फिर उसको हम बताएंगे कि वेदर ये फिजिबल है कि नहीं है। जबकि हमें ऊपर डिसीजन मेकर, वही बता रहा हूँ कि वही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली प्रॉब्लम हमें आ जाती है। हमें डायरेक्शन दी जाती हैं कि नहीं जी आपने फिजिबल करना है इसको, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी का पर्पस है कि हमने वेदर ये फिजिबल है या नहीं, आपने फिजिबली करना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सर आपसे, डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बल्कि आपकी राय जो है वो जानना चाहूँगा इनसे, फरमान साहब से नहीं सर, नहीं डॉक्टर साहब से।
एक प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे देखी नाहिल अब्दुल्ला की, जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। किस तरह से पूरा हमारा जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो किस तरह से हमारी किसी भी छोटी सी कोई हमारा इंटरवेंशन के साथ कितना बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। और जैसे उन्होंने मिसाल दी, एक तस्वीर की, वो एक बेयर था जो कि वहीं पे खड़ा था, तो जो बंदे ने कहा कि यार ये बेयर कहाँ से आ गया, उसने कहा मैं तो यहीं पे था, आप ऊपर से आए हैं। और सेम एग्जांपल जो है हम देखते हैं किसी भी साइट के ऊपर, जो हम टर्मिसाइड यूज़ करते हैं, तो वो टर्मिसाइड हमें यही कह रही होती हैं कि यहाँ तो मैं पहले रहती थी, आप लोग तो बाद में आए हैं, तो मुझे क्यों किल कर रहे हैं। तो इस एस्पेक्ट को जो था बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल है जिसमें हम जो सारे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कितना स्कोप है इस तरह की चीज़ों को सेंसिटिवली अपने डिज़ाइंस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको स्पेस देने की। अस्सलाम वालेकुम। सर ये आवाज़ नहीं आ रही। ये वाला यूज़ कर। आवाज़ नहीं है, अब आ रही है। ठीक है, मैं प्रेस सर, आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। बेसिकली हम बातें की की बात करके जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक जो चीज़ है एज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट मैं जो फील करता हूँ वो ये है कि जी हमारे पास कंज्यूमर के होता है। अब एक आदमी है जो सारी ज़िंदगी की सेविंग करके अपना एक घर बनाने की कोशिश करता है, वो बारे में हेलो जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और हमारे मुल्क के लिए बहुत आइडियल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्ली इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो पाती है। उसकी वजह ये है कि जो भी बिल्डर है, जैसे कि एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन मेरे पास आता है घर बनाने के लिए, जब मैं उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ तो वो बमुश्किल तमाम वो एक अपनी छत डाल सकता है। कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं, जो कि देखी हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक आम कंज्यूमर तक वो कैसे पहुँचेगा, वो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इन माय ओपिनियन कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, आसान किस्तों में जो बिल्डर है उसको पैसे दे सकता है कि वो अपना घर बना ले। अब वो चाहता है कि जी मैं इसको एनर्जी एफिशिएंट भी करूँ, मैं सोलर पैनल भी लगा लूँ और कैविटी वॉल भी डाल दूँ, ही नीड्स अ मनी। उसके लिए अगर बैंक उसको कोई ऐसी पॉलिसी हो जो कि उसको उसके आइडिया को सेकंड करे, तो मे बी वो फ्यूचर में बहुत सारी एनर्जी ज़ाया होने से बचा लेगा, इन माय ओपिनियन। सर एज अ प्रोफेशनल एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सस्टेनेबल मटेरियल की जहाँ तक बात हो रही है, एज एन आर्किटेक्ट मैं ये समझता हूँ कि जब तक दो चीज़ें हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, मटेरियल को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें सीलिंग के लिए या सीलिंग का वेट उसको ज़मीन पे जब हम उसको डालते हैं, यानी कि फाउंडेशन जब हम बनाते हैं, हमें फाउंडेशन बहुत महंगी पड़ती है। अगर हमें पता हो कि जी हमने ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जो कि लाइट वेट है, तो फाउंडेशन की भी रकम काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम थोड़ा लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर के ऊपर इन मटेरियल को अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल बैम्बू की एग्जाम्पल दी, बैम्बू एक अच्छा जिसको हम कहते हैं जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको कंक्रीट के साथ मिक्सअप करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि हम आरसीसी को चेंज कर लें अपने किसी लोकल मटेरियल के साथ, में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसके लिए हमें रिसर्च और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी सी हो जाए और लोगों को कन्वीनियंटली मटेरियल यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मेरे ख्याल में सस्टेनेबिलिटी की एक बड़ी बड़ी खिदमत हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं आखिर में फरमान साहब से जो है इनकी राय लेना चाहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप एक इम्पॉर्टेंट इदारे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीकेएचपी को, और उसके अलावा हमें एक कमी महसूस होती है जब भी हम एज एन प्रैक्टिशनर काम करते हैं एज आर्किटेक्ट्स, और मेरे ख्याल में टाउन प्लानर्स को भी ये एक लिमिटेशन शायद मिलती होगी
कि हमारे यहाँ पे कोई आर्किटेक्चरल पॉलिसी एज अ होलिस्टिक आर्किटेक्चरल पॉलिसी फॉर द होल कंट्री वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। और जब पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती तो जो हमारी गाइडलाइंस हैं, बेसिकली कोई भी गाइडलाइंस और जो भी आगे उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो चीज़ें होती हैं वो बाद में आती हैं पॉलिसी के बाद। तो पीकेटी का जो है आर्किटेक्चरल पॉलिसी के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या इस वक्त वो कितना उसके ऊपर काम कर चुके हैं या करना चाहिए उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मुझसे पहले तो मंसूर साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में पीकेटी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है, और जो सवाल आप पूछे मंसूर साहब ने एक ही मतलब आपको जवाब दीजिएगा कि जी हमारी सारी प्लानिंग है, अगर पंजाब की प्लानिंग होता है तो सारी एलडीए की प्लानिंग है जो सारे पंजाब पे इम्प्लीमेंट होती है। इस तरह अगर हम केपीके की कोई मतलब कोई बायलाज उठाएं तो पूरे के पूरे बायलाज जो है पूरे केपीके की बिल्डिंग बायलाज आ जाते हैं। उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि जी हमारी हिल स्टेशंस में या सिटी में या विलेज में कौन से बायलाज होने चाहिए। सर, चूँकि ये टॉपिक चल रहा है सस्टेनेबिलिटी का, अगर हम सस्टेनेबिलिटी पे देख लें तो एज आ आर्किटेक्ट बहुत सा लोग यही सोचते हैं कि जी हम ये करें वो करें, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात है कि जी हम कार्बन फुटप्रिंट को किस तरह कम करें, तो उसके लिए लाजमी है कि बायलाज में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उस पर जो उसने लम्स ने करवाई थी एनर्जी रिफॉर्म्स पे, लेकिन सारी की सारी बातें उसमें यही हो रही थी कि हम एनर्जी को किस तरह सेव करें। सर, अगर हम अपने पुराने आर्किटेक्चर्स या पुराने एराज में जाएं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी उस वक्त हमें एयर कंडीशंस की ज़रूरत नहीं थी, वाई आज हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है सर। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा तो इस पर हम काम कर रहे थे, तो जब मेरे चेयरमैन साहब से और डिफरेंट जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं उससे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी हम अपने केस स्टडीज़ देख लें जो हमारे करीब जो कौंसल्स हैं, जिस तरह बांग्लादेश है, इंडिया है या इस तरह। तो सर मैंने जब उनके स्टडीज़ उनको जो स्टडी किया तो वो हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस चीज़ पे सोचा हुआ है कि जी हमने एक सस्टेनेबल किस तरह रहना है, और उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं हर जोन्स के हिसाब से कि जी उन्होंने किस किस्म की कंस्ट्रक्शन कहाँ पे किस तरह करनी है। अगर यही चीज़ हमारे बायलाज में आ जाए और इस पे पीकेटी काम करें कि जी हम पहले तो मटीरियल्स को डिफ़ाइन करें। हमारे इवन अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ पे मोस्टली आर्किटेक्ट्स रिवेट को यूज़ कर रहे होंगे, रिवेट में हमसे क्वेश्चन किए जाते कि आर वैल्यूज़ क्या है किसी चीज़ के, किसी मटेरियल के, अगर वो ब्रिक के हो गए, कंक्रीट के हो गए, या हमसे लाइट्स के बारे में पूछा जाता है कि जी यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी क्या है, डे लाइट क्या है, नाइट लाइट क्या है। सर उसके बारे में हमारे पास इवन एज अ आर्किटेक्ट यहाँ पे बहुत से आर्किटेक्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि ये आर वैल्यूज़ क्या है। सर पहले तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर इसके लिए लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए जहाँ से, या इसके लिए R&D होनी चाहिए जहाँ से हम ये सीख सकें कि जी इस मटेरियल का इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट क्या है। सर ये यहाँ पे एक मरकज़ बन रहा है, तबलीगी मरकज़, एक छोटा सा वो मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। तो वहाँ पे मुझे एज आर्किटेक्ट बुलाया गया, तो वहाँ मुझसे सबसे पहले ये पूछा गया था कि जी आप डे लाइट्स को डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो मेरे साथ इस तरह कोई प्रोसीजर नहीं था। या दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे यही किया था कि जी आप मटेरियल्स के आर वैल्यूज जो कॉफिशिएंट्स है वो डिफ़ाइन करें। तो मेरे साथ कोई इस तरह का मतलब कोई प्रोसीजर नहीं था जो मैं डिफ़ाइन कर सकता था। तो अगर हमारे एजुकेशन में ये चीज़ें आई तो मेरे ख्याल में इससे बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे पास वाइंड अप करने की जो है वो कॉल्स भी साथ में आ रही हैं, चूँकि इसके बाद कोई और इवेंट भी होना है। तो ये जो पैनल डिस्कशन है इसको आप सब ने समाअत फरमाया, और अगर किसी के जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि पैनलिस्ट से करना चाहें तो आपके पास मेरे ख्याल में सिर्फ एक क्वेश्चन करने की इजाज़त है चेयरमैन की इजाज़त से। जी उमर भाई।
बिल्कुल सर इस पे मैं आपके इस कमेंट के साथ ही हम इस पैनल डिस्कशन को क्लोज करते हैं और सब पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ जी फरमाएं, माइक दे दें। सर थैंक यू वेरी मच। इसके लिए टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद CDM में मैं डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल भी था और DG बिल्डिंग कंट्रोल भी रहा हूँ। तो उस वक्त हमने एक डिज़ाइन कमेटी, जो डिज़ाइन बैठक कमेटी बनाई थी ना, उसमें हमने 5 प्रोफेशन के लोग रखे थे, ताकि मतलब टाउन प्लानर था, वो उसके बाईलाज प्लानिंग पैरामीटर्स को क्लैरिफाई करे। आर्किटेक्ट था, वो अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर इंजीनियर था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर था, फायर फाइटिंग का एक्सपर्ट था। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वेस्टेड इंटरेस्ट में अब उस डिज़ाइन वेटिंग कमेटी की कंपोजिशन ही चेंज कर दी गई है। तो मैं इस फोरम से, जो IAP है और मैं वाइस चेयरमैन टाउन प्लानिंग हूँ PKP, तो मेरा ख्याल है कि हमें मिल के इस चीज़ को करना चाहिए कि डिज़ाइन वेटिंग कमेटी जो है उसको फिर ब्रॉड बेस होना चाहिए, और इस ज़रिए से हम CDA के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर इन टोटलिटी नहीं तो अच्छे लेवल तक हम, अच्छे स्केल में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल और जो मेरे जहन में एक शेर मुझे याद आ रहा था अल्लामा इकबाल साहब का कि मुझे करेक्ट कर दिए, मेरे ख्याल में एक मिसरा ही मुझे याद आ रहा है कि वो है ना कि बैरून दरिया कुछ नहीं, हम हाँ सब मिलके बोलो, नहीं सब इकट्ठे बोलो। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो उमर भाई ने जो बात की, मैं चाह रहा था कि सब मिल के ये शेर हम पढ़ें तो हमें वो जो एक यूनिटी, और आप जो इसकी बात कर रहे थे कि हम खुद ही वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इनफैक्ट, तो हम खुद ही अगर वो हल कर दें तो इंशाल्लाह मसले हल हो सकते हैं। इस तमाम पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और इतना यहाँ पे इस सेशन में अपनी कंट्रीब्यूशन देने का। और फ्यूचर में हम ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी चैप्टर है, जो चेयरमैन साहब हैं, वो ये जो सिफारिशात हैं हमारी इस पैनल डिस्कशन की, जो यहाँ पे आज प्रेजेंटेशंस हुई हैं, इनकी जो सिफारिशात हैं, ये मुक़्तदर जो हल्के हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे, और इंशाल्लाह इसको हम परसू भी करेंगे IP और PKP के लेवल्स पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। Thank you so much, Tahir, for moderating moderating the panel. Or फिर sir, we have a mementos and certificate for them. Now, I would like to invite Architect Abdullah Khan, Chairman, Rawalpindi-Islamabad Chapter. Sir, please join us on the stage. Architect Zulfikar Ali, President IAP, Architect Umar Saeed, and Architect Saad Mahmood, immediate past President IAP. I would like to invite Architect Manal Abdullah to please come on stage. मुझे बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की आवाज़ आ रही है।
Architect Shazia Qureshi. Now I would like to invite our last speaker, Architect Mansoor Ahmed Qureshi, to please come on stage and take his memento. Architect Mansoor. Now, we would like to, he's already on the stage, Dr. Asghar Naeem. Yes, sir. Sir, वहाँ से आ रही है memento. Dr. Ghulam Sarwar Sindhu. Our third panelist, Architect Miraj Ahmed Azim. I think he has left. Ji. Now we have Architect Farmanullah, our fourth panelist. And our last panelist, who is the MD PPAC, Nawazish Iqbal. Thank you so much, all of you. We would like to have a group photo with you, and then it is followed by a refreshment, and then we have a guided tour with you to see all the expo, please. Ji, ji. I'm so thankful to all the students who are volunteering day and night for us, and I want they have a group photo with us. Please, students, all the students, join us on the stage.
पीछे बैक बेंचर्स हैं, स्टेज पे आ जाओ फॉर अ ग्रुप फोटो. All the students, you are requested to please join us on stage for a group photo. Shahira, please सबको stage पे लेके for a group photo. Iman, Asra, Arusak, what is stopping you to come on the stage? Volunteer students. Stage पे आओ for a photograph. Volunteers of all the IPEX, not specifically forum, all volunteers, please come on the stage. Sir Fawad, can you join us for a photograph? And Wajid, and also.
Hello, sick. Hello. Hello. Hello, sick.
Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, everyone. Hello. Hello, everyone. Hello, sound check 1, 2, 3. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me at the end? Can you hear me at the end of the hall? At the end? Yes. I can't hear you. I can't hear you guys. Hello, Can you hear me? hello, hello. I can't hear you. I can hear you, Wajid. Hello, Can you hear me, hello, Wajid? sick. Can you hear me, Wajid? Can Hello. you guys Hello. please request everyone to be here as soon as possible so that we can start with our progressions. Uh, can you please recognize यहाँ पे NCA के कितने हैं? Do we have NCA people here? NCA. Do we have NCA here? Do we have ComSats here? ComSats. UET. Hazara University. Hazara University. Everyone, please let everyone know we are starting as soon as possible. अपनी universities को बता दें please. The drum circle is ready. We'll start with drum circles. अहमद भाई हमारे आ चुके हैं और हमारे drums भी आ चुके हैं. So we are starting as soon as possible. So everyone is requested to ask everyone to join us here as soon as possible. Wajid.
हेलो Any volunteers? Volunteers, please. कौन है यहाँ पे? तुम रहने दो ना, तुम परफॉर्मेंस कर रहे हो. Volunteers कौन? इधर आओ.
People in the house, please. सब आगे आगे आ जाएं. First two rows छोड़ के आगे आगे आके बैठना शुरू करें. We are about to begin. आ जाओ आगे यार, आसान अल्फाज में आगे आगे आ जाएं. People in the house, please. सारे स्टूडेंट्स प्लीज आगे आके अगली रोज को फिल करें. क्या हुआ?
Excuse me. Hello. People in the house, please. Architecture students, आगे आएं, सीट फिल्स करें ताकि हम formally start करें. All students are requested to come forward and fill the seats, please. Voice. Hello. First 3 rows खाली चाहिए होंगी, please. Please. Thank you. First 3 rows. Relocate हो जाएं आप लोग. जो third row में बैठे हैं relocate हो जाएं. First 3 rows खाली चाहिए हमें. Excuse me, guys. Volunteers in the house, please raise your hands. Volunteers. Good, good, good. और कहाँ हैं? Volunteers, raise your hands. Kindly. Hello. Please settle down. Please settle down. People in the house. Guys, hello. 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 Please settle down.
Volunteers, raise your hand. Rehan, Rehan. Wajid, Wajid. Wajid. सर आप सब ड्रम बजा रहे हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ठीक है आवाज़ आ रही है. Kindly please settle down. People in the back, please settle down. Rehan, please settle down. सही से बजाएं.
हैं अभी बस आप ड्रम्स मारना शुरू करें so we just start the circle इंशाल्लाह हमारी तरफ कर दें वो तो नहीं होगा I was missing the beat on that किसमें वो बजा वो हमें चाहिए होगा आपको चाहिए और यार ये बात आवाज़ क्योंकि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही कोई मॉनिटर नहीं है ना वो डबल आवाज़ आ रही है मेरे को वो Please, people in the back, settle down. स्टार्ट कराएं Excuse me. Please settle down. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी Auditorium volunteers, please लोगों को बिठाएं, settle down करवाएं. सो जिन जिन के पास ड्रम्स हैं इफ़ यू कैन काइंडली गैदर सेंटर में ताकि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड साउंड आ जाए या वी कैन डू लाइक 2 3 4 लेयर्स एट द बैक एज वेल बट ये सेंटर एरिया फिल कर लें विद द ड्रम्स जी 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 सो whoever has the drums वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में आ जाएं Students, जिस वॉलंटियर के पास ड्रम है प्लीज सेंटर में बैठे वो. ऑल वॉलंटियर्स विद ड्रम्स सेंटर में आ जाएं आप लोग. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम everybody. So thank you for having us here. Thank you IAP for calling Drum Circle Islamabad to this wonderful auditorium and this wonderful exhibition over here. So the activity today, आप लोगों ने drums देखे होंगे और हर किसी को तलब हो रही होगी कि अब इनको बजाना भी शुरू करें. So we'll get right into it. So let's hear a bit of noise.
वालों को कराना चाहिए आगे. Wonderful. So the activity for today, drum circle. It's a very beautiful, unique experience that we also want to share हर किसी के साथ. Like any form of art, it's about rhythm, and we believe कि आप किसी भी art, किसी भी entertainment को and anything that you're enjoying, if you share it with everybody else as well, तो उसका एक magnify हो जाता है impact. So today we want to create harmony. A lot of people आप लोग आपस में जानते भी होंगे, might have been working along with already. So एक teamwork का भी होता है, एक collective playing का भी होता है. So the objective today, हमने basic rhythms आप लोगों को introduce कराने हैं basic rhythms से. So once we start the whole session, eventually the whole crowd can create that rhythm together. And once you start understanding the beat, तो फिर इसमें फिर आपने explore भी करना है, ठीक है? So you have the djembe in front of you. In the center we have the bass. So beach में we have the bass. On the sides, we have the trebles, lows. Very nice. So हम लोग छोटे-छोटे थोड़े से rhythms, थोड़े से try करेंगे combinations, ठीक है? वो पहले हम बजाएंगे और फिर उसके बाद उसको follow करना है. So we do call and response, ठीक है? इसमें once we have these various rhythms, ज़रा हाथ भी बैठ जाता है, तो फिर then we'll collectively come into a single rhythm. And आप note करेंगे, the whole beat goes in a cycle, like 1, 2, 3, 4. एक 4 का एक simple एक loop चल रहा होता है. So we'll start with a few basic rhythms. You have to play it once. So we do it once. पहले हम करेंगे, फिर आपने respond करना है, ठीक है? We'll try different variations. And एक दफा करके you stop. Very nice.
So we have, I think, 4, 5, 8 universities over here. तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं. चले NCA से सबसे ज़्यादा शोर अभी उन्होंने मचाया था. So तो यहाँ पे, so जिनके पास भी drums है, now you know the beat. ठीक है. So we'll give you a count of 4. उसके बाद फिर आपने beat बजानी है. ठीक है. देखते हैं फिर we'll move on to the next university and see how it goes. So 1, 2, 3, 4. कौन मुकाबला कर रहा है अगला? वी हैव कॉमसैट से कौन है? आपके साथ मैं बजाऊंगा. आप तो ओके, वी नो द बीट. सो 1, 2, 3, 4. Next university. Now we see कि किसमें कितना जज्बा है. So who do we have next? Sada. नस. ओह नस. नस से कौन है? लगता है सारे जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वही कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं है. So okay, let's start together. ठीक है. अब हमें लगता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोग हाथ खींचने लगे हुए हैं. So लाहौर, we have लाहौर here as well. लाहौर से कौन है? लाहौर वाले. So okay, 1, 2, 3, 4.
two, three, four, five, six, seven, eight. One, 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 two, three, four, five, six, seven, eight. Three, four, five, six, seven, eight. One, two, 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 three, four, five, six, seven, Thank you so much, everybody. We had an amazing time. This is Hamad, and we have Ahmed here as well. And thank you for having us here. So I hope you guys had a great time as well. और अब हर जगह अपनी टेबलें शेबलें बजाएं, थोड़ा सा ज़रा शोर मचाया करें. ये धमाल चलना चाहिए. Thank you so much. ये आपको वापस रखने पड़ेंगे. Thank you very much, Drum Circle. Thank you very much. A big round of applause for them. Hello. Mic check. Mic. I'll request volunteers कि वो drums वापस पीछे backstage पे ले आएं. Volunteers. एक न्यूज़ फ्लैश है सब
ख़वातीन और हजरात के लिए, अगर आप सुन सकते हैं मुझे, स्टूडेंट नाइट्स को कहा जा रहा है कि कैंसिल कर रहे हैं, हम करेंगे संडे को, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे आर्किटेक्ट्स फोरम। सो हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो आएंगे उनके लिए आप थोड़ा सा वेट करें और हम फॉर्मली शुरू करते हैं अपना फोरम सेशन। बहुत शुक्रिया। प्लीज वॉलंटियर जो दरवाजों पे खड़े हैं दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे बंद हो रहे हैं बेटा, आज ही मिलेंगे। Hello. Thank you so much. Thank you so much, Drum Circle. Please, a huge round of applause for Drum Circle. Volunteers. Also, can I please request you all to pass on the drums to the left side, please? My left side. And also, I request all the quiz participants to please come on backstage. We're starting the quiz in 5 minutes. Quiz participants, please come to the backside. Cheers, Charlie. A humble request, everyone. Please be seated. We are starting the official student night in 2 minutes. It was a small joke. Apologies. And also, Drum Circle की तरफ से एक request है कि जिन्होंने भी videos बनाई हैं, प्लीज़ उनको Instagram पे follow करें Drum Circle इस्लामाबाद के नाम से और उनको videos tag करें. Please, everyone, support them. They've been doing this in Islamabad for quite some time now. Do we have the quiz participants here? Quiz participants को बुला लो. Quiz participants कहाँ हैं? मेरे को laptop दे. One. Please settle down. Thank you so much, everyone. Please settle down so that we can proceed.
Please settle down. जो लोग पीछे बैठे हैं kindly आगे आ जाएं. So this was the drum circle. अभी हम next शुरू कर रहे हैं. We have a lot of performances coming up our way. But उससे पहले a few important things if everyone is please attentive. Can you guys hear me? Okay, so we'll start it officially, the student night of IPEX 2024. I welcome you all here at the student night. All the universities, all the senior architects, all the juniors, all the graduates, all the volunteers and the students who are here for the first time. I think this would be one memorable student night for you guys, or you can make it one memorable student night for you to remember in future. We'll proceed with our architecture quiz after a brief introduction by our chairman, our past chairman and convener IPEX, Architect Fawad Suhail Abbasi. Please come on stage, Architect Fawad Suhail Abbasi. थैंक यू वेरी मच. अगर इसी तरह फोरम पे भी आ जाते सब तो अच्छा गुजर जाता फोरम. तो अब कल के लिए ये है कि जो सुबह फोरम पे नहीं आया तो कॉन्सर्ट कैंसिल है, ठीक है ना? तो कल सब ने फोरम पे आना है, कुछ सीखना है और फिर शाम में मज़े करने. एनीवेज, आई एम थैंकफुल टू द चेयरमैन ऑफ IPRAC आकिर अब्दुल्ला खान, द इंटायर टीम, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. हमारे बहुत सारे सीनियर्स आए हुए हैं. We have the immediate past president sitting in front of us, Saad Mahmood Khan Sahab. We have the Umar Kakar Sahab. We have the chairman of Lahore chapter, Shai Jamal Sahab, and so many amazing people who've come here all the way. कल नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी है, सो हर जगह से लोग आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं. सो मेहमान नवाजी का तरीका ये होता है कि you ask them how they are, you take them around, you look after them, and I think that's something जो हम सबको सिखाया जाता है अपने घरों में. And today definitely I think every year चीज़ें और मज़ेदार होती जा रही हैं. Student nights is your night, the first night, जिसमें हम सब आप लोगों को we give you the stage to enjoy yourself. And अब साथ में आज ड्रम सर्कल आप लोगों ने देखा, it's such an amazing thing. I think मुझे तो बहुत मज़ा आया, I'm sure आप लोगों को मज़ा आया. I think a round of applause for the people behind this. इजहार, मुस्तफ़ा and of course जनाब वाजिद साहब, तीनों ने बहुत ही मज़ेदार चीज़ प्लान की. हर दफ़ा कुछ नया करते हैं. कल वाला concert is also something new that we'll be doing. So I hope all of you will be there. Call your friends, call other students. जो लोग मिस कर रहे हैं, they really miss a lot of new things that are happening. सबसे important बात before I go is that the Institute of Architects Pakistan is your professional body, the only professional body of architects in Pakistan. आपकी recognition है. सबसे अच्छी बात है कि IEP जो है वो आप कहीं भी जाओगे, किसी मुल्क में भी जाओगे और आप किसी और आर्किटेक्ट से मिलोगे तो आपकी recognition आपका इंस्टीट्यूट होता है. So please try and give it time after you graduate, before you graduate. Be proud of your institute. IEP is your global recognition. We are members of the Acacia, which is the Architects Regional Council Asia. We are members of CAA. Interestingly, जो आजकल CAA के वाइस प्रेसिडेंट एशिया के उमर सईद साहब दो हैट्स पहने हुए बैठे हैं. So, it's amazing to have so many, and there are a number of other people, Jahangir Shehbaz Saab, who's headed Acacia, and now will be heading AirOff also, or, he's been past president of IEP. Many of our seniors, Kaleem Siddiqui Saab has been past president of CA. So let's enjoy being part of IEP, enjoy coming back every year. जो इतनी सारे lectures आप लोगों के लिए करते हैं उनको attend किया करो. And this night is your night. Enjoy yourself. Thank you again, and thank you for the EC and the organizing committee of IPEX 2024. Thank you. Thank you so much. People in the house, architectural quiz. Wajid, we are waiting for you on stage for the quiz.
अपने साथ अपनी अपनी एक चेयर अरेंज कर लें we will proceed with the architecture quiz. We have 4 universities. I would request NCA to please be seated on my left. NCA. NCA, please be seated on the left. Next is UET Ahmedabad. आप एक सीट दूर दूर करें चेयर्स दूर दूर करें एक एक सीट छोड़ के बैठ जाएं या एक एक साथ बैठ जाएं लेकिन दूर करें Next, I'd like to invite ComSats. ComSats, please come on stage. Next, we have Hazara University. So we would proceed with a short introduction, names and universities, please. Assalamu alaikum. I am Mohammad Noman from NCA National College of Arts, Rawalpindi, 4th year. Assalamu alaikum everyone. My name is Taimur. I'm from 4th year architecture, National College of Arts. Pleased to meet you guys. Hello. Assalamu alaikum. I am Ubaidullah from UET Ahmedabad. I am from 5th year. 4th year, Umar Farooq. Assalamu alaikum. I am Hadia Shakil from ComSat University. Assalamu alaikum. I'm Manur Chishti from ComSat's 4th year architecture. Assalamu alaikum. I am Harman Khan from Hazara University. Assalamu alaikum. I am Syed Harun Shah from Hazara University, student of 3rd year. So, can we listen it up for everyone? Please, a huge round of applause for these people who are here to present their skills in architecture, terminology, history, and local architecture. Please, a huge round of applause for all these students. जो तालियां नहीं बजा रहे ये सारे आपसे बेहतर है तभी आज स्टेज पे बैठे हैं कुछ शर्म कर लें तालियां ही बजा दें So we'll start with the rules. हमारे पास different phases होंगे इस architecture quiz के सबसे पहले हम start करेंगे simple round होगा quick question answers जिसमें हम focus करेंगे local, international and national knowledge of architecture. हमारे पास initially we were expecting 8 teams, 8 universities who are presenting their work in the sustainable AI workshop, but I believe there are only 4, so we'll have no more elimination in the rounds. We'll continue with the questions, and at the end we'll announce the winner with the highest score. So the first phase is quick question answers. The second one would be recognize the image, and the third would be sketch
and recognize the image. One partner would have to sketch the building that we'll tell them, and the other one has to recognize the building. So the first question for NCA is, who designed a church in Islamabad inspired from Tadawando's Church of Light? आप church का नाम बता सकते हैं, architect का नाम बता सकते हैं. A church in Islamabad inspired from Tadawando's Church of Light. Architect Anwar Saad. And no, not. The church in F8. The church in F8 by Don't know the name. by Naeem Pasha. Naeem This is Pasha. the wrong answer, but we'll go with it. The next question, please. Who is the architect of Serena Hotel Nair Islamabad? Dada. Please wait for your turn. So that makes a -2 from your side. And we know the answer of this question as well. Series wise. Okay. The second question for UAT Ahmedabad. Who gave the first proposal of design for Supreme Court Islamabad? Kenzo Tange. Correct answer is. Any guesses? Any guesses, everyone? Correct answer is Kenzo Tange. So the third question for group 3 is, kindly name the architect of Awan Sadr. Ji. Group 3. Habib Fida Ali. Sorry, it No. is Edward Durstone. Wrong answer. We'll move on to the fifth question. Next, please. Kindly name the architect of Awan Sadr again. Please move on. What is the common striking feature of a mosque? Group four. Minaret. Correct answer. But again, this was a trial questions. There are no marking for these 4 or 5 questions. These were just to warm you up. But now, please wait for your turn. And group 1 is NCA, 2 is UAT, 3rd is ComSats, and 4th is Hazara. So please wait for your turn and answer only when you're asked. So we'll start scoring from this round. For group 1, the first question from local architecture is, who designed Minar-e-Pakistan? We have very short time, please. No answers. You mean pass? We'll move it to the second one. Who designed Minar-e-Pakistan? Nasiruddin Murad Khan. Nasiruddin Murad Khan. Correct answer, everyone. So for group 3, which firm designed Centaurus Islamabad? An international firm was hired for Centaurus Islamabad for the initial concept. Very famous, still in the top 10, very short name. We'll move on to the 4th group. Can you please answer which firm designed Centaurus Islamabad? 4th. It is Atkins who gave the initial concept, so the answer is considered wrong. So in the first round, we have 1 correct answer and 3 wrong. Manzoor, keeping score. So we move on to round 2 for group 1. Pakistan's first female architect. Name the Pakistan's first female architect. Yasmin Lari. Correct answer. Okay, from the international
side of the architecture, who designed Church of Light building? A very simple question for UAT Ahmedabad. Tadawando. Correct answer, please. For group 3, who was the architect of Bauhaus, Germany? A very simple question. Walter Gropius. Certainly. Correct answer. I'm just playing with you. So the fourth question is, where is Alhambra Palace located? For Hazara University, where is Alhambra Palace located? Greece. Certainly. Alhambra Palace, the famous Alhambra Palace. Any answers from the crowd? Granada, Spain. So this is a wrong answer. We'll move on to the next question from group 1. A very simple question. Who designed Falling Water House and at what location? Frank Lloyd Wright. And location? California? Wrong. But we'll consider it a correct answer. We'll move on to the another one. Group 2, Hagia Sophia is an example of what architectural style? What architecture style represents Moroccan, Byzantine? Byzantine. Partially correct answer, but we would continue with it as a wrong answer because this is not an MCQ. MCQ is another round. I was just giving you an option. No, it's already answered. So we move to the next one. You'll be more happier with that as well. The Guggenheim Museum of Art was designed by whom? A very simple question. So Frank Lloyd Wright. Correct answer. Next question is, as of 2024, what is the tallest twin tower building in the world? For group 1. Group 4. Twin Tower. The tallest twin tower in the world. Located in recent one? No, it's an old one. It's in Malaysia. It's a twin tower with a bridge. It's a 2 tower with a bridge. The time is over. We'll move to the group 1. As of 2024, what is the tallest twin tower building in the world? Twin Tower, Malaysia. Wrong answer. It's Petronas, Kuala Lumpur. So we move on to the next question. It was already answered by our senior Marine, but next please. Usman, next please. Who designed the world's tallest twin tower building in the world? Who designed the world's tallest twin tower building in the world? Petronas, जिसका इससे पहले भी सवाल था. Who was the architect? Group 3 जिनको ज़्यादा पिछले आंसर के शौक था, they can answer it as well. Or group 4? So okay. It was Caesar Pelli. So we'll move to another question for group 3. Next. Which architect has never worked in modern style? Rastrelli, Guimard, or Gaudi? Which architect for group? Antonio Gaudi. Gaudi. Correct answer, please. So this round has MCQs. Please, you can rotate your chairs so that you can see it properly. Tilt it halfway. We are on group 4. The group 4 will answer because you already did that.
Which famous architect designed Balto House and the Sagrada Familia in Barcelona? Adolf Loos, Antonio Gaudi, Charles Rennie. Sagrada Familia is a very old, very long construction building which is still under construction. We will go with second one. Antonio Gaudi. Do you want to call a friend? No. No. Correct answer, Antonio Gaudi. So group 1, the 3 classic orders of classic architecture are Iconic, Corinthian, and which other order? Doric. Correct answer. For group 2, which architecture style is derived from the work of Andrea Palladio? Gothic, Baroque, Palladian. Option C, Palladian. Correct answer, please. Thank you. Sahi karne ke liye. Which French architect and structural engineer, should I move on? A. Gustave. Yeah, okay, thank you. Correct answer. For group 4, the Sydney Opera House designed by John Hudson is an iconic example of which architecture style? Brutalism, Expressionism, Deconstructivism. Group 4. Quick answer, please. Iconic example of which architecture style? Sydney Opera House. Brutalism. Brutalism. Wrong answer. Correct answer is Expressionism. So on this we have a result for the first phase. NCA scored 3 out of 6. UAD scored 4 out of 6. ComSat scored 4 out of 6. Hazara scored 2 out of 6. We'll move on to another phase. So phase 2, the first question for team 1. So you have 2 towers and you have to guess from the image the location, the architect and the name of the building, or any 2 of these 3. Hudson Yards in Chicago. Sorry, wrong answer. We'll move on to the next group. Very Icon Tower, Karachi. Exactly, the correct answer. Thank you. So the name of the firm that designed a university in Islamabad. A very modernist architect whose house is also a very iconic architecture style. Nasir Iqbal. Correct answer. So very famous, very important building of our Pakistan. Guess the architect, location, and the name of the building. Any 2 of these. It is located in Lahore. Designed by? Designed by Nayyar Ali Dada. Okay, and what building is that? It's a mosque. No, sorry. Correct answer. Grand Jamia Mosque, Lahore. This is a correct answer. You should be happy about it. Please move on to the next one. Guess the architect of the building. Yeah. NCA. Guess the architect. Name of the building. City of the building is Karachi. HBL. By. Karachi. By. Correct answer is Leo A. Delhi. So we'll move on to the next one. A very famous local building of Pakistan. Guess the architect and the name of the building. This architecture style is very famous. Sir, its architect is Nayyar Ali Dada. It's in front of Expo Center, Lahore. Correct answer. This is another very simple example of a modern building for group 3.
please. Telenor 345. Architect? Or the firm or the Nespark. Nespark. Wrong answer. नहीं hold hold. We had a very huge, a very massive visit to this building in the Yes, recent name starts with A ना और second वाला J से start A होता B है. C D E F G H I J K L M N O P. Or the architect name or the firm's name. नहीं Nespark नहीं है Nespark नहीं है. मैं भूल गई हूँ. It slipped my. क्या करें? Next. We'll take it as a correct answer, but the architect or the firm should have been mentioned. It's Jawed Jalani and Arcop is the firm. Telenor 345 है. We'll go to guess the international building in China with the name of the building or the architect. Please hurry up. Shanghai. And name of the building or the architect. Okay, we'll move it to the first group. No, we'll move the same question to the NCA. Group 1. Name the architect or the name of the building. It's for sure in China, but who's the architect and ये हमारा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है. we don't have much time, please. We'll move it to the next UAT Ahmedabad. The previous same question. UAT, do you want to answer this one or you want to move on? Hashtag tower. Should we give you another option? We'll move to another question because this is a bit difficult. Guess this one. UAT Ahmedabad. Heather Center by Okay. Zahadid. Correct answer. Next question, please. Okay, guess the building, architect and location of the international building. Museum of the Future और दुबई में है और architect कौन है? Architect is also important, ना? हलवा तो नहीं आएगा ऐसे ही. मुश्किल वाला था. क्या? दो चीजें बता दी है ना. दो बता दी है ना. पिछले वाला CCTV HQ था. वो ये बता दिया. Last 2 seconds. नहीं बता. Repeat the answer. जो भी आपने answer किया था repeat कर दें. Museum of the Future Dubai. Correct answer. So the architect is Sean Killer. Sean Killer. So the fourth round. Name the architect, location. Please, group 4. Architect, location, and name of the building. Location China. Sorry, wrong answer. We'll move it to okay, at the end of this round, we have in this round, collective answers would be shown. In this round, UET and ComSats are leading with full score. NCA with no correct answers, and Hazara University with 1 correct answers. So we'll move to the phase. Till then, we'll have a compiled. So the next phase is going to be sketch it. इसमें होना ये है कि group 1 आप में से एक बंदा, group 2 आप में से एक बंदा, 3, 4 आप में से एक बंदा आएगा. They'll be given a name of a building and you'll have to sketch it in 1 minute, and then the other person has to guess the name. Four of each
has to come. One of each group has to come. One of each. Twin Tower, USA, Chicago. नहीं, Twin Tower, Malaysia. Twin Tower, Malaysia. The next one, please. No, it's over. Correct. Correct. Burj Al Arab, Dubai.
Sydney Opera House. Why John Olson? This is X powered by Norman Foster. Wrong answer. So we have. Please sit down. So we have a final result here. NCA scored 4 points out of 10. UAT scored 7 points out of 10. ComSat scored the same 7 points out of 10, and we'll have a tiebreaker. And Hazara scored 4 out of 10. So we have a tiebreaker for each. So it's a simple question, and the tie is between UAT. You can sit straight forward. आगे अब इससे आगे कोई और आपको उधर नहीं दिखाई देंगे. So we'll have to choose one winner. So आप दोनों में से एक ही सवाल आएगा. आप दोनों के पास माइक्स हैं, और जिन्होंने इसको पहले आंसर किया वो आपके विनर्स होंगे. Are you ready? Okay. Best of 3. Best of 3. So the first question is, Meinhardt is an international firm based in Islamabad, but which country did it originate from? Meinhardt. Turkey. Wrong answer. We'll move to another question. Who designed the State Life Building Islamabad? Who designed the State Life Building Islamabad? It's a very simple question. State Life Building, blue area. Who is the architect of State Life Building? State Life Naim Building. Pasha. Correct answer. It's basically two words, Wali and Fuad, and Naim Pasha. So we have one correct answer. Should I ask another? Best of 3. But this is a buzzer round. You have to answer right away. Who is the architect of Monument of Pakistan? Correct answer, but we'll go for another one. Any question from the crowd? Ukasha, please. One question. Who is the architect of Faisal Mosque? Correct answer. Correct answer is Vedat Daloke, is a Turkish architect. Ukasha, do you accept it as the correct answer? So we have the winner here, or it's still a choose because they answered one. 1 out of 3 were correct from them, and 1 you answered, so it's still. So we'll go for another one. Last question from Jawad, or Ukasha again. Ukasha again. Jali. What is the full form of PPAC? Jawad, any question in your mind? So we'll go with this last question. Who is the architect of Park Saudi Tower in Islamabad? Park Saudi Tower in Islamabad. Correct answer. And I believe there is a clear answer, and the answer is correct as well. So the winner goes to ComSats. Congratulations, everyone.
Thanks so much everyone for joining us. A huge round of applause for all the volunteers. Please, we'll start off with the musicians. Thank you so much. अपनी chairs उठा लो. So we have our musical performances. The first musical performance is by Safana. बोर हो गए हैं आप सारे? मुझे पता है आप सब बोर हो चुके हैं. So we have a performance lined up by NCA students and they'll introduce themselves by the end. So Numaish from NCA. Warm welcome for Numaish, please. Hello, hello. Hello, hello. Assalamu alaikum. अच्छा guys, hello, hello, hello. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा guys, हम सब NCA वाले हैं और NCA में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट. उनमें से एक छोटी सी सोसाइटी है नुमाइश, जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो एक छोटा सा प्ले है, नरेशन है बेसिकली. तो आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं.
शहर के गोशों में हैं बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब जिनसे शहर वाले हैं बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोज़ो शब कि इनको जमा कर लूँ, मिट्टी पे तपाऊँ जिससे उतर जाए पुराना मैल। चमक उठे लबो रुखसार ओ गर्दन जैसे नौ आरास्ता दूल्हों के दिल की हसरत। फिर से इन ख्वाबों को समते रह ले। सुबह होते ही चौक पर जाकर लगाता हूँ सदा, यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर कोई ख्वाबदा ना हो। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरत गरे सानी हूँ बस, हाँ मगर मेरी मईशत का सहारा ये ख्वाब है। शाम हो जाती है, मैं फिर से लगाता हूँ सदा, मुफ्त सुनकर और भी डर जाते हैं लोग, चुपके से सिरक जाते हैं लोग। देखना रात हो जाती है, ख्वाबों के पलंदे सर पर रख के मुंह बसूरे लोटता हूँ, रात भर बुड़बुड़ाता हूँ। ये ले लो ख्वाब, ले लो मुझसे इनके दाम भी, ख्वाब ले लो ख्वाब ख्वाब। ख्वाब ख्वाब Thank you so much guys, thank you। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक नई कोशिश की है हमने। और मैं अब आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, प्लीज़ नुमाइश। स्टेज पे आ जाओ, सब आ जाओ। सो वी आर नुमाइश। सबसे पहले हमारे पास हमारे यहाँ हमारे साथ हैं अफरीदी, शर्जील अफरीदी साहब, अब्दुल राफे, मुदस्सिर, कामरान कामी, तंजीफ, यशा, अबीहा और मरियम सोहेल, रवीन, फिज़ा, उर्वा, मलाइका और कशमाला। नोवेला यहाँ पे कहीं पे बैठी हुई है, मुझे हाँ नोवेला, वो भी हमारी मेंबर है। और थैंक यू सो मच, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और थैंक यू, बस थैंक यू। Big thank you, Numaish. Big thank you. Another group from NCA, the people are performing. Thank you so much, Numaish.
So people in the house. Many people in the house. There are a lot of them sitting. So another group from the NCA, the people are performing. Please give them a warm welcome. वो क्लोज क्लोज कर लेना, ये भी है, ये किधर जाना है? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोपहर का वक्त है, धूप निकली हुई है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। मगर एक लड़का है जो बहुत खुश है। दिन तो आम सा है मगर ये लड़का बहुत खुश है क्योंकि आज इसका रिजल्ट आया है। और ये रिजल्ट कोई ऐसा वैसा नहीं, इसका एफएससी का रिजल्ट है। और अब ये अपने अब्बा को बताने जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आया है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा, आपका बेटा सेकेंड ईयर एफएससी इंजीनियरिंग से क्लियर कर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा मेरा बेटा। कितने आए? 80%, 90%? कितने लेके आया मेरा बेटा? पापा, ये ज्यादा नहीं हो गया? मेरे हिसाब से तो 4 6 46 बेस्ट है। क्या बोले? 46% पापा, 46। अरे ओ बारीकी अम्मा, सुनती हो? तुम्हारा लाडला 46% लाया। कितने? 46%। इधर आप 46%। तुझे लगता है नफ है ये? सही है 46%? ये सामने देख, सामने कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जी। कुछ लगते नहीं है मगर हैं जी जी, बड़े बड़े हैं। इन जैसा बनना था तुम्हें। कैसे बनेगा? इस्लामाबाद में एक एक्सपो लगा है जहां बड़े बड़े लोग आते हैं बड़ा बड़ा बनते हैं। तू भी जाएगा बड़ा आदि बन के? कैसा? अब्बा जी के धक्के और मुक्के खाने के बाद ये जनाब निकल पड़े हैं यूनिवर्सिटी की तलाश में और सीधा जाके लैंड किए हैं आईएपी के एक्सपो पे। एक्सपो तो मैं आ गया, अब बस यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे वरना अब्बा की कुट बहुत लगनी है। देखते हैं कौन है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या करना चाहते हो बड़े होके बेटा? बताओ मुझे। आर्किटेक्चर सर। आर्किटेक्चर, यस यस। तो पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे, कहाँ से करोगे आर्किटेक्चर? बताओ सर। वही देखने यहाँ आया था। वही देखने यही आए थे? शाबाश। मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम आर्किटेक्चर कहाँ, अबे इधर आर्किटेक्चर कहाँ से करोगे? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, बहुत मजा आएगा। बोलो, कर पाओगे? जी कर लूंगा। कर लोगे ना? शाबाश। नंबर कितने आए थे बेटा तुम्हारे? बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह 46% आई थी। 46? जी जी 46, माशाल्लाह।
बेटा तू नस ना जा, तू नस जा। क्या संकेत है यार, अच्छा हुआ चले गए, भाई कोई और ढूंढ यार। लेकिन In the Barbie world, life in plastic. ब्रो तुम कैसे हो? क्या कर रहे ब्रो? ब्रो बस अभी एफएससी क्लियर किए, एक्सपो आया था यूनिवर्सिटीज के हवाले से। ब्रो कॉन्सर्ट आ जाओ यार। ब्रो मुझे अब्बा बता रहे थे कॉन्सर्ट का, यार सीन क्या है ब्रो? सीन ब्रो बस सीन ऐसा है, ना फैकल्टी है ना स्टूडियोज। तो ब्रो हो क्या रहे वहाँ? ब्रो सिर्फ अटेंडेंस। अटेंडेंस? मोहम्मद क्या मतलब? ब्रो तुमने जाना है गेट नंबर 3 पे अटेंडेंस लगवानी है। लग गई। फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, 3rd फ्लोर पे जाओ, बहुत मजा आएगा। वो सब तो ठीक है, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और 3rd फ्लोर का क्या सीन? ब्रो टीटो पार्टियां। आजा फॉर्म में ब्रो, ब्रो फॉर्म में जो फॉर्म यार ये अच्छा है। बॉयज कॉलेज बॉयज बाबा जी की मूर्ति। अरे लड़के कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ भाई कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो एक्सपो पे? यार बस अभी एफएससी की है, अभी यूनिवर्सिटीज के दाखिले से आया था। तो क्या सोचा फिर तुमने? यार जरा घुमाऊं, कॉन्सर्ट्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, बस फॉर्म भरने की देर है, एडमिशन पक्का। तो तुम्हारा एनसीए के बारे में क्या ख्याल है? यार ब्रो चाचा बता रहे थे एनसीए का सीन क्या है इसका, ये बताओ। रुको बताता हूँ टीना। हाय बेबी। ये सीन है एनसीए का। हेलो। हाय। हेलो। ब्रो लाइक करना क्या होगा ब्रो? लाइक प्रोसीजर क्या है, होगा क्या? करना क्या चाहते हो?
यार एनसीए कौन कौन सी फील्ड ऑफर कर रही है? रुको बताता हूँ। हमारे पास वीसीडी है, थोड़ा सा टेक्सटाइल भी है हमारे पास, और आर्की की तो क्या ही बात है। आर्किटेक्चर, लेकिन कम्बख्त अब्बा ने कहा था सिर्फ आर्की कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे। खैर हाँ ब्रो, अच्छा एक मिनट मैंने सुना है चौथा डिपार्टमेंट में कोई होता है। वो तो अभी हम पी के आ रहे हैं। ब्रो यार ये फिट सीन है ब्रो। लाइक अब सबने ये बताओ प्रोसीजर क्या है, अप्लाई क्या है, भाई सीन क्या है बताइए इन्हें। देख मैं सेकंड ईयर में हूँ, वो उनका 8वां साल चल रहा है, 8वां। कोई मसला नहीं है, हमें सब आता है। मुझे ऑटो कैड भी आता है, मुझे रैबिट भी आता है, मुझे राइनो भी आता है। आपको आता है राइनो? आपको? हाँ आपसे पूछ रही हूँ, नहीं आता ना? पता है आर्किटेक्ट्स को कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, लेकिन हमें सब आता है। तो तू आ, ये बता तुम्हारी परसेंटेज क्या है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह 46% आई थी। अरे पकड़ो इस लड़के को, ये तो अपना लड़का है। जो बात है, वैसे तू आ जा, ये भी इस साल चले जाएंगे। चले जाएंगे ना? इंशाल्लाह उम्मीद रखें। शायद इस बार चले जाएंगे। शायद। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ड्राइंग आती है? ड्राइंग? हाँ बना लेता हूँ, देख लेंगे। देखो सिर्फ स्टिक फिगर्स चाहिए और कुछ नहीं। बन जाएगी, हो जाएगा। बस बेटा बस, आजा तेरे साथ चलते, आजा। वो सब तो ठीक है, एक मिनट। बोलो। आपका सेकंड ईयर समझ में आता है, इनका 8वां साल कैसे? मेहनत करनी पड़ती है 8वें साल के लिए। नए बच्चे है ना, सिखाना पड़ता है। कुछ बच्चे 5 में भी निकल जाते हैं। चलो एनसी के पप्पा से मिलवाते हैं। चलो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में धक्के मुक्के खाने के बाद जनाब को एक यूनिवर्सिटी समझ आई है, और वो है एनसीए। और आज है इनका एनसीए में पहला दिन। हाँ भाई, फाइनली एनसीए। बाबा जी की बूटी। ओए फर्स्ट ईयर, मुर्गा बन। इसको किधर नीचे रख रहे? उठा, बेइज्जती करता है। सॉरी बोल इसे। सॉरी। मुर्गा बन। इंट्रो करवाओ अपना। मेरा नाम अब्दुल बारी, अच्छा मुर्गा कौन मिलेगा? मेरा नाम अब्दुल बारी, अच्छा बच्चा। अबे जिसका भी बच्चा बाहर हो, चल बाहर हो, चल। पीते पिलाते घूमते घुमाते 5 साल तो जनाब ने गुजार लिए, लेकिन अब आया है फाइनल ईयर, और आज का दिन है ज्यूरी का। ओ माय गॉड लग गई। ओ माय गॉड लग गई। तेरी शीटें कहाँ है? शीटें मेरी प्रिंट हुई, मैं प्रिंट करवा के रह गई। वो लेता भाई यार, शीट ये शीट मॉडल रहेगी यार। वालेकुम सलाम बेटा। इंट्रोडक्शन तो कराओ अपना लोगों को। माय नेम अब्दुल बारी, द गुड बॉय, आर्किटेक्ट, एनसीए। जी सर। बेटा अपनी ज्यूरी के बारे में कुछ बताओ, प्लीज स्टार्ट। जी सर, जल्दी करो। जी सर। सर मेरा जो टाइटल है वो है द रीफर्टिलाइजेशन। रीफर्टिलाइजेशन। एक मिनट सर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन पाकिस्तान। अच्छा आगे बढ़ो जी। सर मेरा ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये 20 कैनाल्स के ऊपर बेस है। 10 कैनाल ओटीएस एंड 10 कैनाल। ओटीएस क्या होता है बेटा?
ओपन टू स्काई मतलब सब दिखता है। जी जी हाँ, तो सर इसको मैंने अर्बनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए और आज के बाजारी हालात को देखते हुए इसको बनाया है। सर इसके अंदर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, उनसे छोटे बच्चे, औरतें, हजरात, मर्द हजरात सब आ सकते हैं। सर एक पब्लिक स्पेस है, ये मैं गवर्नमेंट को डोनेट करूँगा। सर ये नेचर और लाइट और एक हवा। बस बस बस, बहुत बहुत शशकों वाली बातें कर ली है तुमने। आई एम अ टेक्निकल पर्सन भाई, आर्किटेक्ट हूँ मैं। मेरे साथ कंस्ट्रक्शनल मेथड के ऊपर बात करो। मुझे ये बताओ इसमें सरिया कितना डाला है और वो कितना गहरा है? फाउंडेशन कितनी गहरी है भाई? बताओ बेटा बताओ, लोग वेट कर रहे हैं, बताओ। सर सरिया तो उतना ही है जितना एनसीए के जूनियर्स में होता है। Excuse me, sir. I'm from SADA. I know all the technicalities of architecture of my project. आप मेरी कब लेंगे जूरी? पुत्र, तू SADA का है, साढ़े नाल का नहीं। शोरिया कंटिन्यू जी जी सर। सर तो इसको मैंने बनाया था, इसका जो मास्टर प्लान है सर ये मैं बनाऊंगा। इसमें सर ये असली जो फॉर्म है सर वो क्यूबिक फॉर्म है। बेटा आजकल सारी ये सब लोग बिल्डिंगें सीधी सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट डब्बे बना के छोड़ देते हैं। मुझे बिल्डिंग थोड़ी कर्व्स के साथ अच्छी लगती है। यू नो 36, 24, 36 फीट। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सारी बिल्डिंग फ्लैट होती है। वो तो है। आगे बढ़ो आगे। लेकिन सर आप भरोसा रखें सर, जब मैं इसको फिजिकली जमीन पे बनाऊंगा मैं कर्व डाल दूंगा। अच्छा बस बहुत बातें कर ली हैं तुमने। अपनी जूरी के बारे में बात करो। तुम्हारे 3D रेंडर्स कहाँ हैं? सर 3D रेंडर्स मुझे बताओ एलिवेशन कहाँ है? सर एलिवेशन। तुम्हारे आइसोमेट्रिक्स कहाँ हैं? सर आइसोमेट्रिक्स। इनिशियल स्केचेस कहाँ हैं? सर इनिशियल स्केचेस नहीं है। तुम्हारा मॉडल कहाँ है बच्चे? यस यही तो चाहिए था बेटा, मॉडल ही तो जरूरी है। नहीं होता सर है सर। आगे देखते बाबा जी की बूटी बाबा जी की बूटी। हाँ भाई लड़के तैयार हो जूरी के लिए? फिर यार घर जाओ यार, हो गई जूरी। क्या मतलब? मेरी इस मर्तबा फिर रह गई। और भाई लग गया। क्या? रिपीटर चल चले। ते मरते क्या ना करते, ग्रेजुएट तो हो गए हैं जनाब, लेकिन इस ग्रेजुएशन के साथ साथ इनके दिल में बहुत से अरमान भी हैं। अब बारी है मार्केट की, देखते हैं मार्केट इन अरमानों का क्या हाल करती है। अरे भाई बैठो बैठो भाई, देख भाई तेरा भाई पास हो गया। डिग्री मिल गई। जो बात है। ओए तूने क्या किया था? सिविल इंजीनियरिंग। तूने इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ सुन एक मस्त स्कीम आई है। क्या? सुन बोल। तू भी सुन। मैंने पकड़ना है एक चाइनीज क्लाइंट। जो बात है। उसकी बनाएंगे हम एक फर्म। जो बात है। मैं अपना 40 निकलवा लूंगा। जो बात है। सुन तेरा 30 भी हो जाएगा। जो बात है। और तू टेंशन ना ले, 20 मिल ही जाएगा। जो बात है। ओए कितना बना? 90। साथ रखता है ना? अबे 90,000। अबे कलमू है 90 करोड़। इसकी आर्किटेक्चर का
ऐसा है तो ऐसा है तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 रात। तो प्लान सक्सेसफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इंटरव्यू के हवाले से आया था। तो आप अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? जी जी, मेरा नाम अब्दुल बारी द गुड बॉय, मैं फ्यूचर आर्किटेक्ट हूँ DNC। DNCA, राइट। जी जी, लग रहा है। शुक्रिया। आप मुझे बताएं किया क्या है अब तक आपने? जी मैंने अपने थीसिस में दी रीफर्टिलाइजेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन पाकिस्तान, इस पे री व्हाट? रीवर्टिलाइजेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन पाकिस्तान। सही। जी ठीक हो गया। आगे कुछ और आपने किया हो? जी जी, अगर उसके अंदर मैंने उसका जो डिज़ाइन था वो मैंने नैयर दादा से इंस्पायर्ड होके डिज़ाइन किया था। उसमें नेचर लाइट बिल्कुल एक हम बोलेंगे आज के मुताबिक एक बेस्ट डिज़ाइन था, वो मैं बोलूँगा। आप मुझे ये बताएं, आपको मोटे मोटे भारी भारी सॉफ्टवेयर्स कितने आते हैं? जैसे कि रेविट, वीरे, राइनो। आप NCA वालों का कहना है कि आप लोग अपने बच्चों को सब कुछ सिखा के मार्केट में भेजते हैं, तो जरा मुझे बताइए आपका क्या सीन है? जी जी, सिखाया था ना मुझे। ऑटोकैड आता है, स्केचअप भी आता है। ऑटोकैड, राइट। NCA से आता तो होगा आपको ऑटोकैड। जी जी। बेटा आप जरा मुझे ये बताएं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं क्लियर कर दूं, NCA से है ना। एक्सपेक्टेशन सैलरी के हवाले। दोस्तों के साथ 90 करोड़ पे बात थी, पहली सैलरी 9 लाख तो बोल ही देता। नो व्हाट? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था जितनी आपको मुनासिब लगे आप दे दीजिएगा। माँ सदके वही मेरी जान, आपको जिस तरह ऑटोकैड आता है ना, 9,000 पे डील डन करते हैं। क्या 9,000? दोस्तों के साथ 90 करोड़, यहाँ 9 लाख, सोचा 9,000। देखें आपकी ज्वाइनिंग मंडे से शार्प 8 o'clock आप मुझे ऑफिस में चाहिए। फिंगरप्रिंट अटेंडेंस है, अगर आप ना हुए तो आपकी आधी सैलरी डिडक्ट। डील लॉक हो गया। साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। आप सबने देख लिया जो गुजरा है, आप सब भी आर्किटेक्ट। पीछे वाले तो खैर चलें छोड़ो, आगे वाले लग रहे हैं फिर भी। तो जी मैं क्या कह रहा था, हाँ आप सबने, शुक्रिया, आप सबने देख लिया जो गुजरा है। आप सब इस फील्ड में रह चुके हैं और आर्किटेक्ट हैं। मैं आपको आगे का क्या ही बताऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप लोग तो बन चुके हैं, मैं भी कुछ ना कुछ बन ही जाऊंगा। चलें चलता हूँ, शुक्रिया। ये थी कहानी अब्दुल बारी की। अब्दुल बारी द गुड आर्किटेक्ट। आज My name is Nahal. I am head of
आवाज आ रही है? सही है। ये सारे मेरे सोसाइटी के बच्चे हैं। मैं इनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। कबीर, अलीना हमारी मैडम थी, मिकाइल हेड ऑफ स्किट सोसाइटी, एसन जूनियर ये हमजा, मिर्जा, शमोएल और शम्मू हमारा, फिजा और सुभान। आई होप आप लोग ने माइंड नहीं किया होगा, ये सिर्फ मस्ती मजाक के लिए था और आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। और गाइस, इस परफॉर्मेंस के लिए कादिर भाई लाहौर से आए थे। Thank you so much, Nihal and group. Now the next musical performance by Abstract Khan and Mahir Babar. आ जाओ यार, आ जाओ, इससे पहले सब सो जाएं। Sing. Hello. Yeah. Assalamu alaikum, everybody. We're going to get started in a little while. Thank you so much for being here. My name is Abstract Khan. This is Mahir Babar performing with me. Can everyone hear me in the back? Woo! Let's go. We got a track for you tonight, 2 tracks, small performance, but we got notified of this just today. So happy to be here. Both of these tracks are unique, new hip hop that I hope you guys haven't heard before. We'll give the signal soon. Hope you guys enjoy the show. Yeah. Abstract can't run from the matrix. Got me trapped cause I'm trying to escape it. These guys are basic. Yeah, they dangle in the money, so you chase it. Never fake it. It's impossible, it gets wrong, I take it. Third eye, gotta wake it. Man, the silly putty look. I think we gotta stay away from the go to that point. Can't run from the matrix. Got me trapped as I try and escape it. These rules kinda basic. Yeah, they dangle in the money, so you chase it. Flows with slow, never fake it. It's impossible, it gets wrong, I take it. Third eye, gotta wake it. Bend the silly putty low, but never break it. Keep in touch with the regular folk. I'll be the man in the middle where the music is all. Like a bananas the minute I'll be hearing the toll. I need a bottle of water before I get in the zone. This song. Kala kala bade last re ikhlasi. Khayalon ka nishana bade khatashi. Where you boys going? Tell me what they are.
Cause I'm coming with my dogs like Kakashi. Can't run from the matrix, got me trapped as I try and escape. These rules kinda basic, yeah, they're dangling the money so you chase it. Flows bestow, never fake it. It's impossible to guess where I'ma take it. Yeah. Third eye gotta wake it. Bend the silly putty law, but never break it. inflation हुई तो फिर खर्चे बढ़ गए बेईमानी के जाने माने चर्चे बढ़ गए जानू के दिन का दिन खर्चे बढ़ गए बेईमान नहीं है लेकिन हम तो डर गए दिल में कब से आते हैं अजीब से शख्स जैसा साया पड़ा मेरे पीछे बट तेरी आंखें रेड मुझे नशे में लगते भाई गप लगाता हूँ माइंड तो नहीं करते Yeah. He's still in high school. That's a problem. Need so hot in Pakistan. I need the air condition, need some mission. Finding this go in this country so impossible is my mission. I'm just looking for Muslim wife. Russian girls is causing so much tension. Can't run from the matrix. Got me trapped as I try and escape it. These rules kinda basic. Yeah, they're dangling the money so you chase it. Flows bestow, never fake it. It's impossible to guess where I'ma take it. Third eye gotta wake it. Bend the silly putty law, but never break it. Saffron Khan and Mahir Babar. He's still in high school. That's a problem. He's still in high school. He's still in high school. That's a problem. Okay, I think that was, yo, this is our first performance ever in front of a crowd of this size. We've been working on our sound for the past 2 years. Previously, I was a software engineer at Google. Mahir Babar was an employee at WAPDA. We're out here hustling as professionals. God gave us this musical gift, and we want to share that with you. The next track is for the Pakhtane in the crowd. We don't got a lot of hip-hop music, so we had to come out here and create that goddamn hip-hop music. Everybody's gotta make it. Breaking my curses, I never fake it. Todo el mundo, I want them to shake it. After profundo, you can't imitate it. While you feel like you better take it. While you feel like you better take it. Say it, what you should do, which the cabine, I do, which the shadow, I got that apart, she's a couple, then the cousin, Orega, orega, orega. Orega, orega, orega. Orega, orega, orega. Orega, orega, orega. हर एक ज़माने के हुक्मरान ज़ालिमान 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 हर एक ज़माने के हुक्मरान ज़ालिमान 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 Laka basi wali shege, shundo basi wali mege, gado wali wali kege, topa khabara na kwege. Laka basi wali shege, shundo basi wali mege, gado wali kege, topa khabara na kwege. Orega, orega, orega. Orega, orega, orega. Orega, orega, orega. Orega, Thank you so much. Yo, thank you so much, guys. This has been Abstract Khan coming in with the Iman. Check us out on Instagram. He's been Mahir Babar. Sit of such. Have a wonderful night, everybody. Stay blessed. You've been great. Thank you so much. Thank you so much, Abstract Khan and Mahir Babar. Now I'll call Safana from NUST for piano performance. Please, warm welcome for Safana. Safana got missing in action.
So next performance is बुलाओ ना उसको. So ladies and gentlemen, Safana from Nust on her keyboard. Thank you so much, Safana. Now, another musical performance from NCA known as Western.
Please, Western guys. A warm welcome for them, please. चेयर रखनी है, चेयर रखनी है, ये निकाल दूं या नहीं? और भी चाहिए ना, कोयर है, बरसात माइक गिटार को केबल लगेगी, गिटार को केबल लगेगी नहीं भाई, स्टैंड स्टैंड के साथ चाहिए, ये लगा दें। म्यूजिक के साथ कौन सा लगाना चाहिए? देखते हैं, हो गया चल रहा है ये। हेलो माइक टेस्ट। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो, ओके वो चेक करो। हेलो, ठीक है फिर हाँ ठीक है। अभी सीट्स जो सीट पे बैठना चाहता है वजदान। अच्छा, कहना तो मैं कर रहा हूँ ना, तो हाँ कहना से कर। Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing good. My name is Taimur and I'm the head of Western Music Society from NCA. Give a round of applause for NCA. Come on! जो बात है तो I'll start off with a fan favorite. It's a cover of Kehna by Umar Farooq. Hope you guys enjoy. Ladies and gentlemen, NCA Music Society. चांद के किरने आए धीमे छू जाए तेरे चेहरे से बोले मुझसे मेरी आँखें कैसे तुमको
कहना चाहे बातें तेरी यादें सताए दूर बढ़ते कहना जो भी कहना चाहे लौट आओ ना यूं सताओ ना पास आके यूं दूर जाओ ना हाँ कहना पाए जो भी कहना चाहे Thank you, thank you. Okay, I would like to take this moment to announce my group members for a moment. So we have basically Isba on the acoustics. Give it up for Isba. Come on. Then we have Noor for the vocals, of course. Wajdan, you guys know well. Come on, give it up for Wajdan. And basically Moiza, of course. Give it up for Moiza. Zan, ladies and gentlemen, come on. And finally, Aisha Sirat. So next one is a mashup. Hope you guys like it. Come on. Hello. Hello. Come on. नहीं Zan. Easy scene. मैं आयशा के साथ. आयशा के साथ. ओके ठीक है. आप जाएं आयशा के साथ. Hello. विदान. तुम दोनों हो मैं विदान में. It's not good enough for me since I've been with you. It's not gonna work for you
कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा सब आपे मन लेणगे अखी जमलंगा सब आपे मन लेणगे अजनी ते कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. चलो, okay. अब तो तुम्हारा ना मेरी कहानी तेरी जिया और मेडले हाँ ठीक है अच्छा ठीक है Next one is this special medley. Hope you guys enjoy. Come on. खेल है सारा फिरता था मैं आवारा ये क्या से क्या हो गया 4 दिन की जिंदगानी हर पल एक नई कहानी क्या था मैं क्या बन गया क्या हुआ जो लारी छूटी जीवन की गाड़ी लूटी अब है तो मुझको ना जगा जिंदगी एक पल में सारी क्यों पलट गई हमारी झूठ है तो मुझको ना बता ओ, कैसी रातें हो बरसातें वो भीगी भीगी यादें वो भीगी भीगी यादें सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार कैसे आएगी बाहर कहाँ से ये हवा आई घटाएं काली क्यों छाई खफा हो गए हम जुदा हो गए हम ओ,
झुलाए ये पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी एक दिन मेरे संग ये जहां था मेरा कुछ और तेरा भी अरमा जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था ये मेरी है कहानी ये मेरी है कहानी कोई फिक्र थी न कोई बहाना मुट्ठी में था जैसे जमाना कच्ची जुबां पे वो गीत गाना नए खिलौने सबको दिखाना मांग लिया जिंदगी से ज्यादा छिन गया वो जिसने किया वादा कौन लाए वो पल जो सुहाने बीते थे जो वो गुजरे जमाने ये मेरी है कहानी ये मेरी है कहानी ये मेरी है कहानी ये मेरी है कहानी Come on, give it up for NCA. नहीं नहीं इजी हाँ आखिरी सॉन्ग है वजदान की वजदान Let us conclude this session with the one and only Wajdan. Come on, give it up for Wajdan. Easy. हाँ. बस ठीक है इसको वापस कर दें आयशा इस तरफ आ जाओ हेलो ओरे पिया है ओरे पिया ओरे पिया है ओरे पिया ओरे पिया है ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया है ओरे पिया ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ साजिश में शामिल सारा जहां है हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है ओरे पिया है ओरे पिया नंगे पैरों के अंगारों चलती रही
चलती रही, लगता है कि गैरों में मैं पलती रही। हाय ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल ज़माना दुश्मन मेरा है। ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया। Thank you very much. Hello. So we have Asad from Sara. Please give him a huge round of applause. Asad from Sara. आप सब ने bored नहीं होना, because we have the last performance, which is Atarn, and we all would want you to join on stage for Atarn. All those जिनको Atarn आता है और पसंद है वो हमें stage पे join कर सकते हैं. Last performance is Atarn. तो गैस टाइम बहुत कम है, तो वक्त की मुनासबत की वजह से मुझे I'm going to just do 2 songs, so I hope you guys like it. याद है मुझे तेरी हर अदा, मुस्कुराहटें तेरी, तेरा मुझसे चुपके से यूं कहना कि तू है सभी रास्ते छोड़ के मैं आई यहाँ, तू तो ना मिला यूं ही
चल दिया लेके मेरा दिल जाने तू कहाँ जाऊंगा कहाँ मैं तो हूँ यहाँ तेरे दिल की आहटों में हूँ नजरों में तू सोचों में तू हर लम्हे में तू धड़के ये दिल तेरे ही लिए होगा किसी का नाम ये जा रहा हूँ मैं जा रही हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रही हूँ मैं खत्म हो गया ओ पढ़ पढ़ इलम ते फाजल हो ते कदे अपने आप नू पढ़या ना ओ भज भज वड़ना ए मंदर मसीती ते कदे मन अपने विच वड़या ना ओ लड़ना रोज शैतान दे नाल ते कदे नफ्स अपने नल लड़या ना ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नाए ते जेड़ा घर बैठा उन्नू पढ़या ना बस करी हो यार इल्मो बस करी हो यार बस करी हो यार इल्मो बस करी हो यार ओ एक अलफ तेरे दरकार अलफ तेरे दरकार हक बस करी हो यार इल्मो बस करी हो यार अल्लाह साया अल्लाह साया वल्लाह साया वल्लाह साया ओ भावे जान ना जान
सोना यार दुसेंदा सानू के बलाते काबा सोना यार दुसेंदा सानू कायल करके मुड़ खबर ना लिया सानू कायल करके मुड़ खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क नचाया कर धैया 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 तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या हो गहराई में जितना भी जाऊं गहराई जितना भी जाऊं तुझको पास मैं उतना ही पाऊं जिससे दरिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या उसे डरना क्या उसे डरना क्या एक लास्ट में एक लास्ट लव्स लफ्ज़ नहीं है मेरे पास तुमसे मैं क्या कहूँ आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं उनमें बह सकूँ लफ्ज़ नहीं है मेरे पास तुमसे मैं क्या कहूँ फिर मैं क्या करूं किस तरह तुमसे ये कहूं आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं उनमें बह सकूं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास तुमसे मैं क्या कहूँ ये दुआ मैं करूं तेरे पाँव की खाक हूँ जो उड़े
से जब भी तू सुने बस यही कहे लफ्ज़ नहीं है मेरे पास तुमसे मैं क्या कहूँ ओके ओके चलो ठीक है हम लोग इधर ही हैं मजा आएगा चलो किधर है रैपर Mic. Sound check. Sound check. चलो Guys, this is Maz. He is from University of Kotli, Azad, Jammu Kashmir. Okay, start the beat. चलो 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 भूल गए सब जैसे कैसे चलता दुनिया का निजाम मिले जो लिखा होगा हर बात का हिसाब चाहे लेकर कुछ भी यहाँ पर रुखसत होगा खाली हाथ झांके दूसरों का किरदार खुद पे आने ना दे बात उनसे रहते ये बेजार खोल दे जो इनके राज कैसा है समाज पहले देखे जो लिबास वाह इनका मिजाज इनको क्या ही दे अब हम खिताब लोग बेशुमार काम में अड़ाते टांग बोलते खिलाफ जान लेते जब नाम खुद ये लाचार तभी खाए खार इनकी कितार लगातार चले चाल आजकल कैसा काम 10 रैप एक बार लिखाई मेरी गरम करूँ हक सच बात जिंदगी में गम मगर रहता हशाश सामना जो करूँ आए जाए मुश्किलात जिंदगी अयाश लड़का मिडिल क्लास जो खूबी तेरे अंदर कर ले तलाश कर इस्तेमाल जरा करके तराश है खजाना दिल में जो खोज निकाल जमाना देगा साफ सोच कमाल बहाने तू बनाना छोड़ होगा तू खबर पीता है तू रोज तो क्या रोज तू इनाम होश संभाल होगा हिसाब कैसा है जमा यार यार को दे दगा मांगते ही माफी हर बार करे गुना फर्ज करे कजा वक्त से न करे अदा आम होता गया गुना चोरी होया जना दिखाई देता साफ जो लौंडे को चढ़े जोश एक जॉइंट मार के जो खो बैठा है होश कामयाबी ना मिले देता खुद को दोष बैठ के तू सोच क्या तेरे जैसे और पैसा कैसे आए हाँ लाख या करोड़ दुनिया की दौड़ इसमें खुद को ना तोड़ दिल में जो दबी है बातें सारे आम बोल न जाने कल की फिक्र की जिक्र करते लोग आए बुरा वक्त तो समझते क्यों बोझ जिसने दिया कल और आज वही देगा रोज क्या पता क्या आना जिंदगी में अगले मोड़ तैयारी भी नहीं कहीं लिखी ना हो मौत दुनिया है यहाँ कभी भी हो सकता नाजिल अज़ाब भूल गए सब जैसे कैसे चलता दुनिया का निजाम मिले जो लिखा होगा हर बात का हिसाब चाहे लेकर कुछ भी यहाँ पर रुखसत होगा खाली हाथ झांके दूसरों का किरदार खुद पे आने ना दे बात तुमसे रहते ये बेजार खोल दे जो इनके राज कैसा है समाज पहले देखे जो लिबास वाह इनका मिजाज इनको क्या ही दे अब हम खिताब
1 2 यार मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो ना। सुनो ना, अब माइक में बोलते जोर से बात सुनो ना, तुम्हें क्या जरूरत है भाई, मेरा फ्लैट दशहरा से पोस्टर वाला होती है। लगा देगा कोई वो चल जाएगा ये। ऑन है, ऑन है। फिजिक्स पढ़ा होता तो फिर अब ये हालत नहीं। हाँ वो था, वह लगा दिखे, मूर्ति वह लगा।
हेलो हेलो एवरीबॉडी प्लीज ये माइक उतारे आप लोगों के पाँव में है बचा के